Hello, 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 hello. Bijbehara Sports Club won the toss and they have elected to bat first.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of the viewers on the official page or Facebook page of Bijbehara Premier League. It is the ultimate showdown. It is the mania of cricket. Semi-final number 1, Bijbehara Sports Club up against Sultan Warriors Baramulla. And it is going to be a thriller of a game. Bijbehara Sports Club have won an all-important toss and they have decided to bat first. Both the teams are equally strong and we are expecting some fireworks in this match. The two openers have made their way out there in the middle. Asif Rasool, accompanied by Shabir Lefty and Imtiaz Lefty, will start with the ball in hands. All in readiness now for this mouth-watering encounter, and it will be a furious encounter between bat and ball here at Nilandrus Cricket Stadium, Bijbehara. Ball number 1. Here we go. The ultimate showdown is underway. Asif Rasool gets off the mark with a clip. First runs on the board for Bijbehara. Asif Rasool and Shabir Lefty, the two important batsmen up front. Asif Rasool, Aqib Mir, Danish Khande, Iqbal Abdullah, Paras Sharma, Parvez Rasool, P. Parag, Shabir Lefty, Wahid Teli, Yasir and Yawar Bilal. This is going to be the 11 for Bijbehara Sports Club in this match. Left-right combination, and we have Sultan Warriors squad. Anjal Singh, Asim Bashir, Imtiaz Lefty, Kulvinder Singh, Manzoor Dar, Mushtaq, Nadeem Dar, Salim Mir, Shubham Garwal, Tajammul Baba, Wasim Kachru. Slip in play for the left-hander, left-hand, right-hand combination out there in the middle. Solid and defense. They will just pinch another single in front of mid-off on the offside. So far, as Bijbehara Sports Club are concerned, they need a start top of the order. They need fireworks from the bat of Asif Rasool. He has disappointed with the bat in this tournament. Fine leg inside the circle. Third man inside the ring. Mid-off, mid-on, up inside the ring. So far solid from Asif Rasool. Nothing heroic. He's not trying to hit the ball hard. He's relying on timing. That's good signs for Bijbehara Sports Club. But for how long can he keep himself in that condition, and can he keep himself on the back foot and playing those dibbly-dobbly singles? He's trying to go for the expensive swing across the line, almost getting stumped. And this has to be avoided by Asif Rasool. Down the leg side, Bijbehara Sports Club going in with a strong team, making a couple of changes. Sultan Warriors Baramulla have also made a couple of changes. They are the ultimate top of the table clashers. They're clashing in this tournament. Only one of them will go into the finals. Second semi-final coming your way tomorrow. Hilvi Rajori will be up against United Imports Srinagar, as we have a slight hold up in the play. As I welcome my fellow commentators Manzoor Bhai and Zubair Bhai. अस्सलामु अलैकुम और स्वागत और खुश आमदीद आप सभी का करना चाहेंगे बिजबेहारा प्रीमियर लीग के ऑफिशियल पेज पे। और घमासान है आज बहुत बड़ा मुकाबला। बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब बनाम सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। टॉस आज जीता था यहाँ कप्तान आसिफ रसूल ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है।
और देख लीजिएगा जो मैदान है खचाखच आज दर्शकों से भरा हुआ है और दूर दूर तक अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो बहुत सारे लोग आज इस मैदान पर नजर आते हुए। मैच ऑफ द सीजन है ये, सेमीफाइनल नंबर 1 लेके आए हैं, आपके साथ जुड़े नीलेंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम बिजबेहारा से। फिलहाल एक विश्राम नजर आता हुआ वहां आज न्यूट्रल अंपायर्स रखे गए हैं, एडवोकेट हिलाल और उनके साथ रफीक बाबा, जो कि आज 2 ऑन फील्ड ऑफिशियल्स रहेंगे। और दोनों टीमों की अगर हम बात करें इस बड़े मुकाबले के अंदर, बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब की टीम जिसमें आपको कप्तान आसिफ रसूल नजर आएंगे, शबीर लेफ्टी के अलावा आकिब मीर, दानिश खांडे, इकबाल अब्दुल्ला, पराज शर्मा, परवेज रसूल, पी परग, शबीर लेफ्टी, वाहिद तेली, यासिर और याबर बिलाल। क्या बढ़िया टूर्नामेंट रहा है कप्तान इम्तियाज लेफ्टी के लिए। शुरुआत में विकेट्स इस खिलाड़ी ने लिए हैं और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इस बिजबेहारा प्रीमियर लीग में। शुरुआत में विकेट्स आसिफ रसूल के लिए, यहां गेंद निकल गई है, थोड़ा सा फंबल होता हुआ दूसरे की मांग रहेगी यहां आसिफ रसूल द्वारा और आसानी से दूसरा रन भी वहां पूरा करेंगे। वहीं अगर हम बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब की बात करें, अंचल सिंह आपको नजर आएंगे, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की अंचल सिंह, आसिम बशीर, इम्तियाज लेफ्टी, कुलविंदर सिंह, मंजूर डार, मुश्ताक, नदीम डार के अलावा सलीम मीर, शुभमन गरवाल, तजमुल बाबा और वसीम काचरू इस टीम का हिस्सा है। ये हैं आज के इस बड़े मुकाबले में दोनों लाइनअप्स। इम्तियाज लेफ्टी एक छोटे रनअप के साथ मीडिया सेंटर एंड से और इस बार पैड लाइंस पे कलायु के सारे टर्न के ऑन साइड की ओर पीछे खिलाड़ी है। जब तक इनको फील्ड किया जाए 2 रन भागने का अवसर इस बार रहेगा आसिफ रसूल के पास। पहला ओवर यहां समाप्त होता हुआ 6 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद बोर्ड पे बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब बगैर किसी विकेट के नुकसान के। और वातावरण अगर आज देखा जाए, आसमान बिल्कुल साफ नजर आता हुआ और क्रिकेट के दृष्टिकोण से एक अच्छा वातावरण आज नीलेंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर इस बड़े मुकाबले के अंदर। पहला सेमीफाइनल मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला बनाम बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब। 6 रन आए हैं पहले ओवर से और जो शुरुआती मुकाबला खेला था शबीर लेफ्टी ने बहुत बढ़िया रन्स बनाए थे। इस खिलाड़ी ने 70 की पारी खेली थी और कहीं ना कहीं आज भी उम्मीद करेगी बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब की शुरुआत में रन्स आ जाए। हालांकि बल्ला चला नहीं है आसिफ रसूल का इस टूर्नामेंट के अंदर, उनका बल्ला तो खामोश रहा है, लेकिन बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, काबिलियत इस खिलाड़ी में, क्षमता इस खिलाड़ी में, एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी के पास बड़े मुकाबलों के और होम क्राउड के सामने खेलते हुए बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब खचाखच मैदान आज भरा हुआ नजर आ रहा है। नीलेंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम बिजबेहारा। गेंदबाजी के मोर्चे पे बाएं हाथ के कुलविंदर सिंह के हाथ में गेंद दी गई है, वो दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे और उनके सामने क्लासी बाएं हाथ के बल्लेबाज शबीर लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। एक स्लिप कॉर्नर, उसके अलावा बैकफुट पॉइंट रीजन, आसिम बशीर के अलावा कवर रीजन पे खिलाड़ी। बढ़िया शॉट यहां, हालांकि आउटफील्ड थोड़ा बहुत स्लो आज नजर आता हुआ। तीसरे की मांग रहेगी यहां, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, थोड़ा सा फंबल होता हुआ नजर आया वहां जो चेज कर रहे थे खिलाड़ी बैकफुट पॉइंट रीजन से, लेकिन बढ़िया शॉट टाइमिंग इस स्ट्रोक में नजर आते हुए, ये विश्वास नजर आता हुआ शबीर लेफ्टी का, क्योंकि पिछला मुकाबला बहुत बढ़िया घटा था इस खिलाड़ी के लिए। 3 रन के साथ ही 9 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। बगैर किसी विकेट के नुकसान के अब स्ट्राइक पे रहेंगे आसिफ रसूल जिनका निजीगत स्कोर 5 पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके साथ शबीर लेफ्टी 4 रन पे बल्लेबाजी करते हुए। कुलविंदर सिंह इन एंड आउट रहे इस टीम का हिस्सा, दूसरा मुकाबला खेले थे, उसके बाद तीसरे मुकाबले में हिस्सा नहीं थे और अब एक बार फिर हिस्सा बने इस लाइनअप का। कुलविंदर सिंह एक लंबे रनअप के साथ, आसिफ रसूल को गेंद लीजिए, यहां टर्न हुए, गेंद को खेला, 4 रन मिल जाएंगे आसिफ रसूल को। शरीर के आसपास के लंबे कद के खिलाड़ी है, बाउंस को नीचे रखने में सफल रहे जमीन के सहारे और आसिफ रसूल को पहला चौका मिलता हुआ। इस चौके के साथ 13 रन बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब बगैर किसी विकेट के नुकसान के। जो टीम यहां से ये मुकाबला जीत जाएगी वो पहुंच जाएगी फाइनल्स के अंदर। और आपको याद दिलाऊं कि
एक मुकाबला जो पिछले साल हुआ था सीजन 3 में बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब बनाम सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, जहां जीत दर्ज की थी बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब ने। ऐसे में 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के दूसरा ओवर पारी का डाला जा रहा है। कुलविंदर सिंह एक लंबे कद के खिलाड़ी गेंदबाजी करते हुए, ये बहुत दिशाहीन गेंद है, ये लेग स्टंप से बाहर और यहां वाइड बॉल की घोषणा होती हुए आज जो दो ऑन फील्ड ऑफिशियल्स है, रफीक अहमद के अलावा एडवोकेट हिलाल अहमद आज इस मुकाबले में अंपायर्स ऑन फील्ड नजर आते हुए, और ये न्यूट्रल अंपायर्स रखे गए हैं इस बड़े मुकाबले के अंदर। यहां बिजबेहारा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जो फैसला लिया गया है इस बड़े मुकाबले के अंदर, एक मिड ऑफ के अलावा मिड ऑन पे खिलाड़ी, कवर रीजन पे खिलाड़ी, आखिरी गेंद कुलविंदर की शॉर्ट गेंद, इस बार पुल करना चाहते थे, ठीक तरीके से आई नहीं बल्ले पर गेंद। रन यहां मिल जाएगा, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स नजर आते हुए, अच्छा तालमेल नजर आता हुआ दोनों बैटर्स का। लेकिन बात अगर हम आसिफ रसूल की करें, बला खामोशी रहा है इस टूर्नामेंट में, रन्स अप फ्रंट उनके बल्ले से नहीं आए। लेकिन आज मालूम कि ये मुकाबले की कितनी बड़ी अहमियत है, सब कुछ माफ किया जाएगा अगर आज आप चलें, अगर आज आपने यहां रन्स बनाए इस बड़े मुकाबले में 15 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। कुलविंदर सिंह जम्मू से आते हैं, एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस कुलविंदर सिंह के पास, और ऐसे में उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज शबीर लेफ्टी रहेंगे। बड़ा शॉट, ऊपर गई गेंद, मिड ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन की ओर जाते हुए, हालांकि बाउंड्री के आसपास मुश्ताक गेंद को रोकने में सफल रहेंगे। 2 रन बनाने का समय बल्लेबाज के पास, हालांकि इस बार टाइमिंग उतनी खास हुई नहीं थी, बैट के ऊपरी हिस्से से लगकर गेंद गई थी। 2 रन के साथ ही 17 बगैर किसी विकेट के नुकसान के, बल्कि मंजूर डार वहां फील्ड करते हुए नजर आ रहे हैं मिड ऑन पे। उसके अलावा मिड ऑफ पे इम्तियाज लेफ्टी टीम के कप्तान, कवर रीजन पे नदीम डार, बैकफुट पॉइंट रीजन पे आसिम बशीर, शॉट थर्डमैन पे तजमुल बाबा, वाइडिश थर्डमैन इलाके पे खिलाड़ी पीछे मौजूद, सिंगल मिल जाएगा और दूसरे की मांग रहेगी। बहुत बढ़िया रनिंग, स्ट्रोक खेलते ही यहां 2 रन भाग गए। बहुत बढ़िया रनिंग नजर आते हुए बिटवीन द विकेट्स, ये अच्छा तालमेल दोनों बैटर्स का नजर आता हुआ। ये रन ऑन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बड़े मुकाबले में, इसलिए अगर आप देखें जुबैर जो टॉस जीता था कप्तान आसिफ रसूल ने, रन ऑन बोर्ड की इंपॉर्टेंस जो हमने सभी नॉकआउट मुकाबलों में देखे हैं, जितने भी नॉकआउट मुकाबले गए हैं, टीम्स विनिंग द टॉस और उन्होंने बैटिंग फर्स्ट की है। 160 170 रन बन जाए बोर्ड पे तो फिर कहीं ना कहीं आप ड्राइविंग सीट में खुद को पाएंगे। 19 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के, आखिरी गेंद शबी लेफ्टी, कलाइयों के सारे ऑन साइड की ओर खेला गया शॉट, हवा में शॉट, पहला विकेट बाहर, शबी लेफ्टी बाहर जाते हुए, शोर बचता हुआ मैदान के भीतर, पहला विकेट आउट होता हुआ बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब का। इनफॉर्म शबी लेफ्टी जाएंगे वापस, 19 पे पहला झटका। This is a bad shot to play. Keeping in mind that there was a fielder kept for that kind of a shot. Only one fielder on the square leg boundary and he picks him out with ease. That's a very bad shot. Keeping in view the form that he has, and he's a very good player, he's a touch player, and acres of spaces, he should have carried this innings through. But it was not his day. It was not going to be his day with a bat in hands. He's gone. Shabir lefty. The first strike comes from Kulwinder Singh and Bijbehara Sports Club. They were looking so good. They have lost the wicket 19 for 1, and good captaincy from Sultan Warriors Baramulla captain as well, because he knew that Shabir Lefty was trying to go across the line. He had a fielder at deep square leg. He had a fielder inside the circle at mid-on, and that was that kind of an invitation to go across the line and try to just clear that boundary, and he picks him out with ease, the fielder at deep square leg. So wicket number 1, and at number 3 the batsman who's making his way out there in the middle, it is not looking like Wahid Teli. Wahid Teli batted in the previous encounter, the quarter final, and he was superb with the bat in hands. But there is another change at number 3, so Kulwinder has struck in his first over, and it will be Asif Rasool to face over number 3. Imtiaz lefty is going to bowl from the media centre end. P. Parag, he too was outstanding in the previous match. He was brilliant with the bat in hands.
Asif Rasool has to be among us the runs today in this match. It's very important for him because they have lost Shabir Lefty earlier on. Now the onus lies on Asif Rasool to steady the ship for Bijbehara Sports Club. With the same field, Imtiaz Lefty going for the expensive hoik across the line once again. Imtiaz Lefty is trying to bowl full and he's trying to bowl on the stumps, having mid-on back on the boundary, and he's having third man and fine leg inside the ring for the right-hander, because he knows that Asif Rasool, he likes to go down the ground and he likes to go for the big shots. But so far Asif Rasool has been very much sedate with his batting. He has tried to play according to the merit of the ball, and that's important from the perspective of Bijbehara Sports Club. He is the key at the top of the order. If he gets going, well, Bijbehara Sports Club will look to score in excess of 200. But Sultan Warriors Baramulla, they have got a very good bowling lineup. They'll definitely want to pick up wickets. Good start. Good solid start from P. Parag to pick up a single in front of mid-off. And Bijbehara Sports Club in the third over, a 21 for the loss of 1 wicket. Asif Rasool up against Imtiaz Lefty, slanting the ball across the right-hander, having a fielder at short third man, having mid-on back on the boundary, having mid-on inside the ring, and this time he has long off back on the boundary. Inside the line, flicks, neat flick, and that will go into the boundary for 4. These are easy pickings. Straying down the leg side, Asif Rasool gets inside the line, flicks it all along the ground, and gets that much awaited boundary. That boundary will do his confidence a world of good. He is looking brilliant today. कोई दोहराई नहीं, आज तो रन्स बनाने पड़ेंगे आसिफ रसूल को. आज बल्ले के उनके बल्ले से रन्स की आवश्यकता है बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब को. इम्तियाज लेफ्टी जगह बनाई स्ट्रोक के लिए, बहुत खतरनाक स्ट्रोक. इम्तियाज लेफ्टी के विरुद्ध है ये, जगह बनाना चाहते थे. इम्तियाज लेफ्टी की अगर हम बात करें, जो खासियत इस गेंदबाज में है विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने की और शुरुआत में विकेट्स लेने की काबिलियत कप्तान इम्तियाज लेफ्टी में, और पूरे टूर्नामेंट के अंदर विकेट्स लेने में कामयाब रहे हैं अप फ्रंट. अब तक एक विकेट आउट हुआ है शबीर लेफ्टी. बड़ा शॉट इस बार, गैप में गई गेंद, करारा प्रहार, 4 रन मिल जाएंगे. ये है ट्रेडमार्क आसिफ रसूल का बल्ला. स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े स्ट्रोक खेला. ये एक बार फिर रिप्लेस के अंदर देखना चाहेंगे. बहुत बढ़िया शॉट है ये आसिफ रसूल. 4 रन देके जाएंगे चौके के साथ. 29 रन एक विकेट के नुकसान पे. इम्तियाज लेफ्टी के विरुद्ध अगर आप रन्स बनाते हैं ना, तो फिर कॉन्फिडेंस. एक बार फिर गई गेंद, ऊपर गई गेंद, नीचे खिलाड़ी ड्रॉप. ये कैच ड्रॉप हो गया है वहां पे. इम्तियाज लेफ्टी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. ओवर थ्रोज के रूप में रन्स बनते हुए, मैदान के अंदर हलचल नजर आती हुए, शोर मचता हुआ. ये मैदान आज खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है. ओवर समाप्त, 3 के बाद 32 पे 1. Listen to the buzz. It is absolutely jam-packed. It's filled to the brim today. You can just have an anticipation of the crowd. They are in absolute numbers here. It's looking noisy. It's very noisy. You can't hear anything in the ground there. Asif Rasool has provided a much-needed start. 32 for 1 after 3. He got away with that. 22 of 12. He was dropped at deep mid-wicket boundary. ये बहुत बड़ा ड्रॉप है. आसिफ रसूल को जीवन दान देना शुरुआत में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए बहुत भारी पड़ सकता है. और ये फील्डर कौन थे मैं देखना चाहूंगा रिप्लेस के अंदर एक बार फिर. वो जो कैच ड्रॉप किया था, बहुत आसान मौका था, उतना मुश्किल चांस तो नहीं नजर आया था. मिड विकेट इलाके में नाखुश कप्तान इम्तियाज लेफ्टी नजर आ रहे हैं. आसिम बशीर भी वहां बहुत नाखुश नजर आते हुए. ये देख लीजिएगा कौन है नीचे. सलीम मीर ने ये कैच गवा दिया है. बहुत बड़ा ड्रॉप इस मैच के दृष्टिकोण से.
आसिफ रसूल चल गए तो बहुत बड़े रन्स बनाने की काबिलियत है इस खिलाड़ी में। 3 ओवर्स का खेल समाप्त होता हुआ 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे। नीलेंद्रो स्पोर्ट्स स्टेडियम आज मुझे बहुत छोटा नजर आ रहा है जुबैर। खचा खच आज तमाशाई मैदान के चारों ओर इस मुकाबले को देखने के लिए दूर दूर से आते हुए नजर आ रहे हैं। पैड लाइन्स पे गेंद, यहां कुलविंदर सिंह की वाइड का इशारा वहां एडवोकेट इलाला द्वारा नजर आता हुआ इस अतिरिक्त रन के सहारे 33 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के जो स्टैंड्स ऊपर हैं वो खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं। सामने अगर आप कैमरा घुमाएं, ये आप देख सकते हैं जो मैदान आज है पूरा सजा हुआ है, एक माहौल बना इस बड़े मुकाबले में। ये देख लीजिएगा स्टैंड्स आज फुल भरे हुए नजर आ रहे हैं। जैम पैकेट स्टेडियम है और इससे बड़ा ब्लॉकबस्टर तो आपको नजर नहीं आएगा। इस मुकाबले को अगर आपने नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। और आज आपसे यही गुजारिश रहेगी कि बिजबिहारा प्रीमियर लीग को आज अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद एक आध मुकाबले ही बचे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। तैतीस रन 1 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर्स का खेल यहां समाप्त होता हुआ और दूर वाले छोर से एक बार फिर कुलविंदर सिंह गेंदबाजी करेंगे। शुरुआती ओवर में एक बड़ा विकेट शबीर लेफ्टी को आउट किया था कुलविंदर सिंह ने, लेकिन पिछले ओवर में बहुत बड़ा जीवनदान मिल गया आसिफ रसूल को। सलीम मीर ने गवाया कैच। कितना भारी पड़ेगा सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला पर। कुलविंदर चले, बार फिर पैड लाइन्स पे इजी पिकिंग आसिफ रसूल के लिए। यहां अगर आप दिन भर गेंदबाजी करेंगे ना तो आसिफ रसूल दिन भर आपको यहां रन्स बनाएंगे। एक सिंगल के साथ 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह घमासान है, ये आज माहौल सजा है नीलेंद्रो स्पोर्ट्स स्टेडियम में। मेरा मानना फाइनल से पहले फाइनल से जुबैर आज, और क्या माहौल सजा है। दर्शकों की प्रशंसा करनी पड़ेगी जिस तरीके से अब तक इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर बहुत बढ़िया डिसिप्लिनेड क्राउड हमें नजर आया है। कोई भी इंटरप्शन क्राउड की ओर से नजर नहीं आया है। हम आज भी उम्मीद करेंगे कि क्राउड की ओर से कोई भी इंटरप्शन नजर नहीं आए। और एक अच्छा मौसम, आज वातावरण बहुत खूबसूरत। क्रिकेट के दृष्टिकोण से जो माहौल है, जो आसमान है, बहुत साफ आज नजर आता हुआ। अक्रॉस द लाइन इस बार गए थे, नए बल्लेबाज अंदर आए हैं। पी पराग आए हैं, वाहिद तेली को आज नहीं भेजा गया है। पी पराग पे कप्तान ने भरोसा जताया। क्या सही सोच यहां जुबैर, क्योंकि एक इनफॉर्म खिलाड़ी को आपने पीछे रखा है। मेरा मानना वाहिद तेली के पास वो काबिलियत थी और रन से इनफॉर्म खिलाड़ी थे वाहिद तेली, लेकिन अंदर आए हैं पी पराग। कितनी अच्छी सोच, ये देखने वाली बात रहेगी। स्पॉट टैप किया, पीछे खिलाड़ी अवॉइडिश सेटमेंट इलाके पे, दूसरे की मांग रहेगी यहां पे। और बढ़िया फील्ड, वहां पे बढ़िया फील्ड एफर्ट नजर आता हुआ। 2 रन यहां बल्लेबाज को मिल जाएंगे। सिर्फ दिशा दिखाते हुए गति का इस्तेमाल किया। 2 रन के साथ ही स्कोर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पे। मैं जुबैर बात कर रहा था वाहिद तेली की, इनफॉर्म खिलाड़ी, रन्स उस खिलाड़ी के पास और कॉन्फिडेंस। पिछले मुकाबले में कमाल के 80 रन उस खिलाड़ी ने बनाए थे, लेकिन यहां कप्तान ने पी पराग पे भरोसा जताया है। पी पराग को प्रमोट किया गया है, नंबर 3 की पोजीशन पे उन्हें बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया गया है। कितना सहमत हैं आप इस बदलाव से? P. Parag has been promoted up in the order because I think they want to keep that left hand right hand combination, because Shabir lefty was dismissed early, so that's why Priyam Parag, he has come to bat. Alongside him will be Asif Rasool, who's doing a pretty good job till now, has batted beautifully, played some beautiful shots. He was dropped on the deep mid wicket, but after that he has played like a dream. Kulvinder Singh bowling to P. Parag. The ball is up in the air. Third man, no, just dropped it in front of him. He was lucky there, Priyam Parag. 2 runs conceded in this ball. हीट देख लीजिएगा आज इस मुकाबले की जुबैर, हीट देख लीजिएगा। फीलिंग द हीट एट द मोमेंट। सभी खिलाड़ी जो मैदान के अंदर है जान झोंक रहे आज। वहां जो बैकअप नजर आया मंजूर डार का, बहुत बढ़िया। हालांकि ऑन बाउंस भी नजर आया था, लेकिन रन सेव करते हुए। इस मुकाबले की अहमियत दोनों टीमें जानती है, हर एक रन की इंपॉर्टेंस दोनों टीमें
सही तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला, हर एक रन की का वैल्यू है। और देखिए जो कैच ड्रॉप किया था सलीम मीर ने, मेरा मानना वो भारी पड़ सकता है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला पे, क्योंकि कितने रन्स और बनाएंगे आसिफ रसूल, वो एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब के लिए। 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद का आना बाकी। पारी का चौथा ओवर लेकर तैयार होते हुए यहां कुलविंदर सिंह आखिरी गेंद के साथ ओवर द विकेट यहां गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज पी पराग हल्के हाथों से खेलते ही रन दौड़ पड़े, रनिंग बिटवीन द विकेट्स अप टू द मार्क अब तक नजर आई है। 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और आपसे निवेदन रहेगा कि आप शेयर जरूर कीजिएगा, आज बिजबिहारा प्रीमियर लीग के इस ऑफिशियल पेज को अपना प्यार दीजिएगा। एक आध मुकाबला ही अब बचा है इस टूर्नामेंट के अंदर, कल दूसरा सेमीफाइनल है हिलव्यू राजौरी बनाम यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर के बीच में कल दूसरा मुकाबला होगा। और ऐसे में कौन सी टीम फाइनल्स के लिए जाएगी, ये सवाल रहने वाला है। 3 घंटे के समय में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टीम बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब या फिर सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला बन जाएगी इस प्रतियोगिता की पहली टीम जो पहुंच जाएगी सेमीफाइनल्स के अंदर। दोनों टीमों की अगर हम बात करें, बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब आसिफ रसूल टीम के कप्तान आकिब मीर आपको नजर आएंगे, दानिश खांडे इस टीम का हिस्सा, इकबाल अब्दुल्ला आईपीएल का एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस लेके आए हैं और इस टूर्नामेंट में बेहतरीन गेंदबाजी उनकी ओर से नजर आया है। पराग शर्मा आज इस टीम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेजेंडरी परवेज रसूल नजर आएंगे, पी पराग, शबीर लिप्टी, वाहिद तेली, यासिर और याबर बिलाल इस टीम का हिस्सा। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला अंचल सिंह, आसिम बशीर, इम्तियाज लेप्टी, कुलविंदर सिंह, मंजूर डार, मुश्ताक नदीम डार, सलीम मीर, शुभम गढ़वाल। इम्तियाज चले नए ओवर के साथ, यहां गैप में गई है गेंद, बहुत खराब गेंद, जगह दी इस बार स्ट्रोक खेलने के लिए, सिर्फ दिशा दिखाई और गेंद चली गई बाउंड्री पार 4 रन के लिए। पी पराग के बल्ले से पहला चौका आता हुआ, बहुत दिशाहीन गेंद थी है और इजी पिकिंग्स वहां बल्लेबाज के लिए। यहां मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है गेंदबाज के लिए। आज विकेट्स की सूची में है नहीं इम्तियाज लेफ्टी, 30 रन अब तक उन्होंने कंसीड किए हैं, विकेट लेस रहे हैं। आप फ्रंट विकेट्स लेने की काबिलियत इस गेंदबाज में, पूरे टूर्नामेंट के अंदर विकेट्स निकाली हैं आप फ्रंट। कप्तान इम्तियाज लेफ्टी ने एक बार फिर गई है गेंद, इस बार फील्डर के ऊपर से जाते हुए पीछा जरूर कर रहे हैं लेकिन गेंद जीत जाएगी, पहुंच जाएगी एक और चौके के लिए। नदीम डार के अलावा सलीम मीर, शुभम गढ़वाल, तजमुल बाबा, वसीम काचरू। में अपने साथी से जानना चाहूंगा, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के पिछले 3 दिन खास नहीं रहे हैं, बहुत बड़े मुकाबले में हारे हैं। बारामुल्ला में कल अगर आपने देखा होगा पटन में मुकाबला, कश्मीर कप के अंदर हार मिली थी, तो कहीं ना कहीं जो 3 मुकाबले, जब शुरुआत में टास में बात हुई थी इम्तियाज लेफ्टी से, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुकाबला है, तैयार है इस मुकाबले की जोरों शोरों से हैं और एक कॉन्फिडेंस के साथ आई है। लेकिन जब आप एक हार के साथ आते हैं अनट्रॉट 3 मुकाबले, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। Definitely, there would be a loss of confidence in today's game as well. When we talk about Sultan Warriors Baramulla, the past 3 days has not been well for them. They lost 3 matches back to back, but today they will be expecting to recover from the journey. Played this one, Asif Rasool would have been in trouble. Direct hit there, but the batsman is in the crease. We were talking about Sultan Warriors Baramulla. They have a compact side, they have a solid side, as well as Bijbehara Sports Club. They too are playing with a balanced team, but on a given day, how you play, that thing matters. It's a big game definitely, but at the end of the day, you have to hold your nerves. That what the team which holds the nerves, definitely they will win. Imtiaz lefty till now conceding 27 runs, has been wicketless today. He takes wickets early, but today he has been wicketless. Left-hander up against a left-arm seam bowler. He's got a third man up inside the ring. He likes to pepper that offside. That is a beautiful shot. Waits for the ball to come. Angles the bat, bisects the fielders, and picks up boundary number 3 in this over. That is brilliant, smart batting from P. Parag. He's carried that confidence from the last game.
And he is looking ominous yet again. Brilliant. 3 boundaries, square of the wicket on the offside. And look at the confidence of the young man. Left-hander. 50 comes up for Bijbehara Sports Club. This time he goes to the other direction in the air. And that has gone into the boundary at square leg. Boundary number 4. Ends the over on a high. 5 overs done. It's 55 for 1. Bijbehara Sports Club are off to a flyer. Bijbehara 22 of 12. Asif Rasool 23 of 13. Almost going with a strike rate of 200, both of them. Once again, pick up shot from outside the off stump. And that is brilliant. Game awareness, field awareness. He knew that there was no fielder. And just gets inside the line and almost scoops it. This time behind square on the onside, and picks up the 4th boundary. An expensive over comes from an end, comes to an end from Imtiaz. Lefty, none for 35 so far. He was the man who struck some early blows in the previous matches, but this time around in this match, he has been clueless. He has been less penetrative, and as a result, he has gone for plenty. 35 of his 3. Kulwinder Singh is going to bowl unchanged. He's picked up a wicket. That was a very bad shot played by Shabir Lefty. Gives himself room. That's a bad shot in the air, but he gets away with that. Fortune favors the brave. He will pick up the 2nd run as well. On a given day, that ball might have ballooned up, straight up in the air for either the fielder at 3rd man or the fielder at cover. And it would have been a soft dismissal, but this time around the ball evades every fielder and goes to the 3rd man boundary for a couple of runs to Asif Rasool. सत्तावन एंड 2 सिंगल्स के साथ 1 विकेट के नुकसान पे शॉर्ट गेंद, इस बार पलटकर स्ट्रोक खेला आसिफ रसूल ने। पीछे खिलाड़ी रहेंगे और बल्लेबाज के पास पूरा समय है 1 रन बनाने का। आसिफ रसूल की हम बात कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। हालांकि अब तक उतने चले नहीं हैं, बल्ला खामोशी नजर आया है इस खिलाड़ी का, लेकिन बड़ा खिलाड़ी, बड़े स्टेज को अपने नाम बनाने की काबिलियत इस खिलाड़ी में मौजूद। और कहीं ना कहीं आज उनके बल्ले से रन्स चाहेगी यहां बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब की टीम, जबकि बहुत जल्दी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला आउट करना चाहेगी आसिफ रसूल को, क्योंकि उनको एक जीवन दान भी दे चुके हैं सलीम मीर, जिन्होंने वो कैच ड्रॉप किया था अगली गेंद, और इस बार स्ट्रोक खेलना चाहते थे। अनुमान से ज्यादा उछाल लिया, इस बार गेंद ने लिया नहीं, पहले ही कमिट हुए थे स्ट्रोक खेलने के लिए बल्लेबाज पीपराग। गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचती हुई 58, 1 विकेट के नुकसान पे हाई आर्म एक्शन के साथ कुलविंदर सिंह, एक अच्छे गेंदबाज, विकेट्स लेने की काबिलियत इस गेंदबाज में, और शुरुआत में ही 1 विकेट आउट किया। शबीर लेफ्टी को चलता किया बहुत जल्दी, उन्होंने आज ज्यादा छाप नहीं छोड़ पाए। शबीर लेफ्टी जिनके बल्ले से पिछले मुकाबले में रन्स आए थे, हवा में शॉट, क्या खिलाड़ी पीछे, खिलाड़ी तो है पीछे, लेकिन उनके सर के ऊपर से आज नो मैंस लैंड में गेंदें जा रही है, और कहीं ना कहीं खुशकिस्मत समझेंगे अपने आप को दोनों बैटर्स। हालांकि ये भी स्ट्रोक कन्विंसिंग था नहीं, बैट के ऊपरी हिस्से से लगकर गेंद गई थी, कंट्रोल में थे नहीं पीपराग स्ट्रोक खेलने में, और 2 रन की सहायता के साथ 60 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बैटिंग क्रम की अगर हम बात करें, वाहिद तेली का आना बाकी, परवेज रसूल का आना बाकी, आकिब मीर का आना बाकी, इकबाल अब्दुल्ला का आना बाकी, दानिश खांडे इस टीम का हिस्सा, तो बहुत बड़ी बैटिंग यूनिट बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब के पास भी है। और इस बार लगभग 34 स्टंप पे आए और लीजिए 4 रन मिल जाएंगे यहां, और ऐसा लगा ही नहीं था कि कनेक्शन उतना सॉलिड हुआ, लेकिन लेग बाइस के रूप में यहां अंपायर एडवोकेट हिलाल के और से इशारा आता हुआ 4 रन और मिल जाएंगे। ये अच्छी शुरुआत नजर आती हुई विद इन द पावर प्ले 64 रन बोर्ड पे लगे। विकेट सिर्फ अब तक 1 ही आउट हुआ है शबीर लेफ्टी के रूप में, ये बहुत बढ़िया शुरुआत नजर आती हुए, भले ही 1 विकेट लेकिन रन्स ऑन बोर्ड की हम हमेशा इंपॉर्टेंस बयान करते हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि पहले 6 ओवर्स में अगर आप विकेट्स हाथ में रखते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं एक्सेलरेट करने का प्रयास जब आपके पास विकेट्स हाथ में ऑन मिडिल ओवर्स में, कहानी बहुत डिफिकल्ट रहती है सभी टीम्स के लिए, क्योंकि जब फील्ड फैल जाती है तो एक डिफरेंट बॉल गेम बन जाता है जुबैर, आसान उसके बाद चीजें नहीं रहती हैं। ये बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ डायमेंशंस की हम बार बार बात कर रहे हैं,
70 से 80 मीटर की बाउंड्रीज हैं, इसलिए जब आप बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं तो प्रॉपर कनेक्शन 70 अगर आप बोर्ड पे लगाने में सफल रहें, कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली अपने आप को बैक करेंगे। See, this power play literally belongs to Bijbehara Sports Club. The way they have batted in this power play, it has been a terrific batting display from Asif Rasool as well as Priyam Parag. After losing that early wicket of Shabir Lefty, they have provided a solid start to their team. See, Bijbehara Sports Club standing on 65. So far, they have lost 1 wicket. The current run rate is 10.83. With this, the projected score is showing 217 runs, and I think that will be enough on this wicket. What's your thing about that? मेरा नहीं मानना 217 रन बन जाएंगे, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए ये जो करंट रन रेट है, ये तो पावर प्ले में बड़ी तेजी से रन्स आए, क्योंकि अब डिफरेंट बॉल गेम रहने वाला है। यहां से अगर आप देखें तो फील्ड अब फैल जाएगी, पावर प्ले का खेल समाप्त हो गया है। अब बाउंड्री लाइन पे आपको खिलाड़ी नजर आएंगे, स्पिन आपको एक्शन में नजर आएगा अंचल सिंह, उसके अलावा नदीम डार के हाथ में गेंद दी जाएगी। आसिम बशीर की अगर हम बात करें, इस टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में पहले पायदान पे हैं आसिम बशीर, और उस हीरो होंडा मोटरसाइकिल को हासिल करने के बिल्कुल करीब नजर आते हुए आसिम बशीर। और क्या खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। अप फ्रंट आपको रन्स बना के देते हैं, गेंदबाजी के साथ विकेट्स इस पूरे टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी के पास। और देख लीजिएगा नदीम डार, एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर के हाथ में गेंद, वो गेंदबाजी करेंगे ठीक मीडिया सेंटर एंड से। रिकॉर्ड तोड़ आज मुकाबला रहेगा सुल्तान बनाम बिजबेहारा। बहुत कम टाइम में बहुत कम मुकाबले आपको नजर आते हैं। बिजबेहारा बनाम सुल्तान वॉरियर्स, सीप के आस पार फाइन खेला, लीजिए गेंद बाउंड्री की ओर जाते हुए तेजी के साथ, और पहुंच जाएगी 4 रन्स के लिए। पी पराग, प्रमोशन आज मिली इस खिलाड़ी को, नंबर 3 पे आए और बहुत बढ़िया काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और देख लीजिएगा 25 गेंदों पे 50 रन की पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए पी पराग और आसिफ रसूल के बीच में पूरी होते हुए चौके के साथ 69 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। मैं बात कर रहा था सुल्तान की। देखिए अगर आप हार के आते हैं, जो पिछले 3 मुकाबले आपने खेले हैं उसमें उतना खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस कम आपको आपके ऊपर नजर आता है। और आज भी अगर आप देखें, शुरुआत में कप्तान इम्तियाज लेफ्टी को विकेट्स नहीं मिले, जो पूरे टूर्नामेंट में विकेट्स निकाल के दी थी। पिछले मुकाबले में 3 बड़े विकेट्स डड्डू रेंजर्स इनफॉर्म दीक्षांत कुंडल को आउट किया था, आदिल गुलदान को आउट किया था, आदिल वानी का विकेट लिया था, लेकिन आज विकेट लेस रहे टीम के कप्तान। और ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अगर इनफॉर्म गेंदबाज टीम के कप्तान विकेट्स लेने में कामयाब नहीं रहते तो दबाव अब इन गेंदबाजों के ऊपर रहने वाला है। जगह बनाई स्ट्रोक के लिए, करारा शॉट, बैट के बीचों बीच लगी गेंद, 4 रन मिल जाएंगे। आसिफ रसूल जब खेलते हैं तो बहुत कमाल के नजर आते हैं। शॉट देख लीजिएगा, ताकत इस खिलाड़ी के पास, ये जो मौका दिया है बार बार सलीम मीर को ये रन्स याद आएंगे। वो जो कैच आपने ड्रॉप किया था, अब बहुत देर हो चुकी है, अब क्या पछताना जब चिड़ियां चुग गई खेत। बहुत देर कर दी सलीम मीर, वो कैच लिया होता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। चौके के साथ 74, 1 विकेट के नुकसान पे। अब आसिफ रसूल को मालूम है कि इस इनिंग्स को किस तरह एंकर करना है, इन मिडिल ओवर्स में आपने किस तरह बल्लेबाजी करनी है। दूसरे की मांग की थी, यहां नाराज नजर आ रहे हैं, हालांकि फिसल भी गए थे। दूसरे रन की जो मांग की थी वहां आसिफ रसूल ने, 75 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और देख लीजिएगा 18 गेंदों पे 30 रन पे जाके पहुंच गए पी पराग, और 17 गेंदों से 31 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिफ रसूल। और ब्रांड है आसिफ रसूल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड। रिवर्स स्वीप किया इस बार, लेकिन सीधा खिलाड़ी के पास कुलविंदर सिंह। इस बार ड्राइविंग एफर्ट, हालांकि तेज गेंदबाज द्वारा आप ज्यादा ड्राइविंग एफर्ट आपको नजर नहीं आते हैं, उतने अच्छे फील्डर तेज गेंदबाज नहीं माने जाते हैं। रन यहां 1 मिल जाएगा, 76 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला फीलिंग द हीट एट द मोमेंट, विकेट चाहिए, बहुत जल्दी ये पार्टनरशिप ब्रेक करनी पड़ेगी। एक बार फिर जगह बनाई स्ट्रोक के लिए, हालांकि उतनी ताकत थी नहीं स्ट्रोक में। रन यहां मिल जाएगा आसिफ रसूल को। ओवर समाप्त होता हुआ 7 के बाद एक अच्छी गति से रन्स बनाते हुए बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब 77 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जुबैर, उस कैच की एक बार फिर हम बात करना चाहेंगे, जो कैच ड्रॉप किया था सलीम मीर ने आसिफ रसूल का, कितना भारी पड़ सकता है वो सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के ऊपर। कैच विन यू मैच, बड़े मुकाबले में सेमीफाइनल मुकाबला, हर एक रन की इंपॉर्टेंस, हर एक कैच की इंपॉर्टेंस।
Definitely, they say catch wins you match, but when you don't take catch, then definitely you will be in trouble. And Asif Rasool provided that life. He is playing like a demon right now. He has played some beautiful shots. It was a tough catch, I do agree, but at this level, in this big competition, you have to grab those chances. If you want to win the game, you have to take half chances as well. And Asif Rasool is turning out to be a monster for Bijbehara Sports Club. The way he is batting in his own element today. He has been not very well throughout the tournament, but this day, this matters the most. The way he will play, that will matter today as well. 7 ओवर्स का खेल समाप्त, 77 रन बोर्ड पे, 1 विकेट के नुकसान पे। देखिए, बड़े खिलाड़ी की यही काबिलियत होती है कि थोड़ा सा मौका मिला तो वो उस मौके को जाया नहीं करते हैं, उस मौके को पूरा उस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं। और ये काबिलियत आसिफ रसूल में। आप कैच ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे इस बड़े मुकाबले में। वो कैच ड्रॉप किया था सलीम मीर द्वारा, वो गलती हुई थी जो कैच शुरुआत में, तब लगभग 17-18 रन पे बल्लेबाजी कर रहे थे आसिफ रसूल। गेंदबाजी में एक और बदलाव देखने को मिल रहा है। आज एक बदलाव जो टीम ने किया है, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला शुभन गढ़वाल आए हैं। ये एक अच्छा कंटेस्ट नजर आएगा। बाएं हाथ के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का जलवा इस मैदान पे अब तक नजर आया है। दूसरे की मांग और आसानी से दूसरा रन पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं आसिफ रसूल। बहुत बढ़िया क्रिकेट, ये बहुत बड़ा मैदान है, यहां गैप में खेल लीजिए, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कीजिए। अब यही काम आपने यहां से करना है, क्योंकि पहले 6 ओवर्स में रन्स देखिए किस गति से आए, लगभग 10 के ऊपर से आपने पहले 6 ओवर्स में रन्स बनाए, और अब इन मिडिल ओवर्स में कहानी यही रहने वाली है। स्ट्राइक रोटेट कीजिए, खराब गेंदों का इंतजार कीजिए। अगली गेंद रिवर्स से बहुत ज्यादा नहीं खेलते हुए नजर आते हैं आसिफ रसूल, लेकिन इस बार अटेम्प्ट किया, सीधा खिलाड़ी को पाया। बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है कि वो बड़े मुकाबले में चमकता है, जिस तरह हमने विराट कोहली को देखा। ऑफ कलर रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन जब बड़ा स्टेज आया फाइनल मुकाबले में कमाल की पारी खेली, मैच विनिंग नॉक ऑन। लीजिए, यहां सिर्फ दिशा दिखा दी इस गेंद को, और इस गेंद को सिर्फ अपने सही परिणाम तक पहुंचाने में सफल रहे। तेज गति से डाली गेंद, लेकिन कहां डाली, पैड लाइंस पे। एक और चौका आसिफ रसूल। अब जहां मर्जी वहां रन्स बटोरते हुए नजर आ रहे हैं दोनों बैटर्स, सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। सुल्तान वॉरियर्स के लिए चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 83 रन 1 विकेट के नुकसान पे। गढ़वाल अगली गेंद के साथ, और इस बार ऑफ साइड पे खेला गया स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी रहेंगे। रन यहां 1 मिल जाएगा। सुल्तान का खेमा क्या सोच रहा होगा, ये विकेट कीपर क्या कर गए बिहाइंड द स्टंप्स। और बॉडी लैंग्वेज तो मुझे ठीक नजर नहीं आ रही है यहां सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की। ओवरथ्रोज के रूप में रन्स दिए हैं, कैच ड्रॉप किए हैं, और मैं अपने साथी से जानना चाहूंगा क्या ये बड़े मुकाबले का प्रेशर है, किस तरह देखते हैं आप इस फील्ड एफर्ट को। Look, they are playing against the home team, and the home team has got the home advantage, and they are playing a very strong side, and Asif Rasool is in his element. He's played some gorgeous shots today. And talking about the captain, he used to come earlier on, he used to strike some blows earlier on up front with a new ball. That hasn't come today, and that is why Sultan Warriors, they are in dire need of a wicket. 86 for 1. The partnership is already worth 60 more runs, more than 60 runs, and Shubham Garwal is gone for 9 runs, 1 more ball to come in the 8th over. And these two, left-hand, right-hand combination, is causing all sorts of problems. And that might be the reason. And this partnership is causing them all that trouble. Gets inside the line, sweeps in the air. Dropped once again. This isn't going the way of Sultan Warriors Baramulla. Or has he been caught? Lot of buzz going on. The two umpires are having a conversation. They are claiming a catch. Sultan Warriors Baramulla, the fielder was there and has been given out. P. Parag. We will have a look at that. There was a fielder at short fine leg. Was that taken cleanly? It is Anchal Singh.
Has that ball gone straight into the bucket-like hands of Anchal Singh? Are the fingers underneath? Everything is being checked. The fingers look underneath, but we can't tell from this angle. It's very hard to tell. Nonetheless, wicket number 2 for Sultan Warriors, Baramulla. A much awaited wicket. 8 overs done. It's 86 for 2. And Bijbehara goes for 31 of 20. और ये देख लीजिएगा, अंचल सिंह नीचे थे, वहां कैच लेने का जो प्रयास किया था, इस एंगल से आउट तो करार दिया है ऑन फील्ड अंपायर्स ने। जी हाँ, ऑन फील्ड अंपायर्स ने तो आउट करार दिया है। और ये देख लीजिएगा आप, इस एंगल से कहना बहुत मुश्किल क्या ये साफ कैच था। ऐसे में आउट करार दिए गए हैं। 86 पे दूसरा विकेट आउट होता हुआ बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब का। अंदर अब आए हैं नए बल्लेबाज, याबर बिलाल को अंदर भेजे हैं कप्तान। और अभी भी वाहिद तेली मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। और आज एक डिफरेंट सोच के साथ बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब नजर आते हुए इस मुकाबले के अंदर। विकेट मिल गया है, बहुत जरूरी था यह विकेट। bijbehara एक अच्छी पारी खेल के वापस गए हैं। अंचल सिंह ने वहां लपका कैच, 86 पे 2। और ये देख लीजिएगा स्वीप करने का प्रयास, ये देख लीजिएगा इस एंगल से। और इस एंगल से तो यहां से जज करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, नेकेड आई से कहना बहुत मुश्किल। शायद अगर आरजे बशीर जूम करेंगे तो मे बी और बेहतर हम देख पाएंगे, लेकिन इस एंगल से कहना बहुत मुश्किल। 86 पे 2, 8 ओवर्स का खेल यहां समाप्त होता हुआ। अब नए बल्लेबाज याबर बिलाल को प्रमोशन मिला है। नंबर 4 पे वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। खचाखच नीलेंद्रो स्पोर्ट्स स्टेडियम भरा हुआ नजर आ रहा है। अगली गेंद धीमी गति से अंचल सिंह ने डाली, जगह बनाना चाहता है इस बार आसिफ रसूल ने, टाइम ठीक तरीके से कर नहीं पाए। गेंद पहुंची वाइडिश लॉन्ग ऑफ इलाके में। जब तक गेंद को फील किया जाए, सिंगल बनाने का अवसर बल्लेबाज के पास। 87 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 9वां ओवर पारी का। अंदर आए नए बल्लेबाज, याबर बिलाल का आक्रमण होता हुआ। पहला मुकाबला ही खेल रहे हैं याबर बिलाल, और आज इस बड़े मुकाबले में टीम में जगह मिली है याबर बिलाल को। और कहीं ना कहीं जो विश्वास जताया गया है इस बड़े मुकाबले में याबर बिलाल पे, उसको आज सही साबित करना पड़ेगा। बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन के सोच के साथ ही आगे जाते हुए नजर आ रही है बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब। देखिए अब याबर बिलाल को प्रमोशन मिला, वाहिद तेली आए नहीं बल्लेबाजी के लिए, एक लेफ्ट हैंडर को प्रमोट किया याबर बिलाल को। बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन मैदान पे। 89 रन, 2 विकेट के नुकसान पे नीलेंद्रो स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज बैठने की जगह भी आपको नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा माहौल आज सजा है यहां पे। अंचल सिंह बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वापस इस बार खेलने में सफल रहे हैं अंचल सिंह। अपना पहला ओवर करते हुए 3 रन अब तक कंसीड किए हैं। विकेट लेस रहे, विकेट अब तक 2 मिली है। कुलविंदर सिंह को विकेट मिला है, और उसके अलावा शुभन गढ़वाल। इस बार जगह बनाई स्ट्रोक के लिए, क्या क्या मिला है, पीछे खिलाड़ी तो है, और पहुंच पाएंगे या नहीं? नहीं, निकल गई है गेंद 4 के लिए। ड्राइविंग एफर्ट एक बार फिर नजर आता हुआ। आज तो फील्ड अप टू द मार्क नहीं है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, ये तो माननी पड़ेगी, क्योंकि आज आपने पहले कैच ड्रॉप किए, ग्राउंड फील्ड उतनी खास मुझे नजर ही नहीं आई आज। चौके के साथ 93 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। ये बहुत बड़ा मुकाबला है, दबाव की स्थिति है, यहां आसान परिस्थितियां हैं नहीं, इस दबाव को झेलना पड़ेगा। प्रेशर कुकर सिचुएशन आज। इस बार बैकफुट पे आए, सिर्फ हल्के हाथों से खेला याबर बिलाल ने। रन मिल जाएगा 9 के बाद 94 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रही है बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब। और देख लीजिएगा इस करंट रन रेट के हिसाब से, जो करंट रन रेट 10.44 की औसत से रन गति 209 तक पहुंच जाएगी। और मेरा मानना अभी भी वो काबिलियत है, अभी भी वो दमखम इस बैटिंग यूनिट में। अगर आप देखें वो गहराई, डाउन ऑर्डर, अभी जो बैटर्स आने बाकी, उनमें क्षमता बड़े शॉट्स खेलने की।
तो अगर ये टोटल 200 के करीब बन गया तो फिर तो आसान ये रन चेज बिल्कुल रहने वाला नहीं है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। सेमीफाइनल मुकाबला 200 आप चेज कर रहे हैं, फिर तो किसी एक बैटर को आज चमकना पड़ेगा। मेरा मानना नजरें तो आज आसिम बशीर के ऊपर ही टिकेंगी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की। इनफॉर्म बैटर, कमाल का प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में पहले पैदान पे। पलट कर स्ट्रोक खेला, ऊपर गई गेंद, गैप में गई गेंद, 4 रन देके जाएगी ये गेंद। कहां गेंदबाजी कर रहे हैं आप शुभम गढ़वाल, ये तो बहुत साधारण गेंद थी। ये देख लीजिएगा, पोजीशन में आए, गेंद को खेला, 4 रन के लिए 98 रन 2 विकेट के नुकसान पे। भले ही विकेट आया लेकिन रन्स नहीं रुक रहे हैं, ये अच्छी चीज है बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब के लिए। विकेट पिछले ओवर में गया, उसका दबाव तो बिल्कुल नजर नहीं आया। जो नए बल्लेबाज आए हैं उनके लिए काम जो सौंपा गया है कप्तान ने कि आइए और बड़े शॉट्स खेले, आपका जो काम है वो बड़े शॉट्स खेलने के। और ये देख लीजिएगा, गैप में प्लेस किया और दूसरे की मांग रहेगी और लग गए बोर्ड पे 100 रन। मात्र 9.2 ओवर के बाद बोर्ड पे आ गए हैं 100 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब बहुत जल्दी ये रन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुभमन गढ़वाल विकेट भले ही लिया है लेकिन रन्स कंसीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वो संतुलन गेंदबाजी में आज नजर नहीं आ रहा है, वो अनुशासन आज नजर नहीं आ रहा है, वो सटीकपन आज मुझे नजर नहीं आ रहा है, वो पैनापन आज सुल्तान की गेंदबाजी में मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। और अब तक बहुत ढीली गेंदबाजी नजर आई है अगली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद वहां शुभमन गढ़वाल की, वापस खेलने में सफल, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला बहुत बढ़िया टीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वादी कश्मीर की जो टॉप टीम्स हैं उनमें एक टीम तो सुल्तान है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन दिन अच्छे नहीं चल रहे सुल्तान के, ये भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 3 मुकाबले लगातार हार के आ रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा था आपसे कि डेफिनेटली वो कंधे झुके हुए नजर आ रहे हैं, और आज उसमें साफ तौर पर मैदान के अंदर भी नजर आया। कैच ड्रॉप के स्लॉपी फील्ड में नजर आए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। तो कहीं ना कहीं अब यहां से अगर आप कमबैक करना चाहते हैं तो एक आध विकेट बहुत जल्दी आपको चटकाना पड़ेगा, खासकर आसिफ रसूल को आप बहुत जल्दी आउट करना चाहेंगे। They are a pretty young side. They haven't got that much of experience to play these bigger games. Bigger games, it's high voltage games, and in these high voltage games you have to be up to the mark. What kind of a shot is that? That is just brilliant. Asif Rasool at his best. Everything he's touching today is turning into gold. Reverse swept that, and reverse swept that with disdain. That is an outstanding shot. We'll definitely like to have a look at this. From the stumps, a switch hit, almost went all the way. That is outstanding batting. 47 of 26. 100 comes up for Bijbehara Sports Club in the 10th over. Shubham Garwal, 1 for 19, is changing his field. Man in the deep has been asked to go at a square position between the umpire and the stumps. Asif Rasool, fuller one, launches it down the ground. Has that gone all the way? It has gone into the boundary, and a 50 for Asif Rasool. What a brilliant knock that has been. A comeback innings from the local hero. Gets that acknowledgement from the crowd. Asif Rasool has played a blinder today. 51 of 27. Come at the big games, come at the man. And this has been the story of the day from Asif Rasool. He was off color to this point, but start of the big game, he has delivered and he has excelled. 10 overs done, halfway stage. Bijbehara Sports Club, a 109 for 2. They are bossing this game at this stage. कोई डाउट इसमें नहीं। आज इस बड़े मंच को अपने नाम किया है आसिफ रसूल ने। 50 रन की एक कमाल की पारी, और देख लीजिएगा क्राउड, देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के स्टैंड्स आज खचाखच आपको भरे हुए नजर आएंगे। कैमरामैन आपको पूरे नज़ारे दिखाएंगे ग्राउंड के, और लगभग मेरा मानना 10,000 के करीब आज दर्शक हैं मैदान के अंदर। ये स्टैंड्स के अलावा अगर आप देख लीजिएगा जो सामने से
अभी तो लोग आ रहे हैं, अभी तो ट्रैफिक जाम बार लगा है। सूचना मुझे मिल रही है कि ट्रैफिक पुलिस को आना पड़ रहा है गाड़ियां कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो गाड़ियां आज सड़क पे पार्क हो रही है जुबैर। और देख लीजिएगा घमासान, देख लीजिएगा आज इस मुकाबले का। When I was making my way into the ground, I saw a huge rush of people. They were marching towards the ground. They were pouring in large numbers. And look at the crowd. There is not an inch of space left. The stands are absolutely filled to their brim. And people are coming in. People are pouring in. Such is the intensity of this encounter. It is an absolutely high-octane encounter. Bijbehara Sports Club, Sultan Warriors, Baramulla. You can't get better than this. देख लीजिएगा ये नज़ारे देख लीजिएगा, इन पलों को याद कीजिएगा। ये देख लीजिएगा, स्टैंड्स में आज आपको जगह नहीं मिल जाएगी। ये दर्शक अभी भी आ रहे हैं। ये मैदान के अंदर जो सूरत हाल है, बाहर तो अभी ट्रैफिक जाम लगा है। जो हमें खबर मिल रही है कि बाहर से अभी बहुत सारे लोग ग्राउंड की ओर आ रहे हैं। और ये शोर सुन लीजिएगा, ये बिजबिहारा प्रीमियर लीग का ये महामुकाबला है। और आज क्या खेले हैं, वो कैच ड्रॉप सलीम मीर को बार बार याद आ जाएगा। बहुत बढ़िया पारे, पूरे टूर्नामेंट के अंदर बल्ला खामोश रहा था आसिफ रसूल का, लेकिन जब चमकने का समय आया तो चमके बड़े स्टेज पे। और ये काबिलियत बड़े खिलाड़ी की होती है। अनडाउटली उनका टूर्नामेंट फ्लॉप रहा है, लेकिन आज सारे उनके जो गुनाह वो माफ किए जाएंगे, आज सारे गलतियां उनके माफ की जाएगी, क्योंकि आज बड़े स्टेज पे आप बड़े खिलाड़ी से परफॉर्म चाहते हैं। जो बातचीत हो रही थी मैनेजर से सुबह, उन्होंने कहा कि आज आसिफ रसूल का दिन रहने वाला है, और आज कहीं ना कहीं उस ड्रॉप कैच को पूरी तरह से कन्वर्ट एक बड़े स्कोर में करते हुए नजर आ रहे हैं आसिफ रसूल। 10 ओवर्स का खेल समाप्त, 109 2 विकेट के नुकसान पे ड्रग्स ट्रॉली मैदान से बाहर। एक बार फिर खेल शुरू होता हुआ ये नीलेंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम में वातावरण बहुत खूबसूरत नजर आता हुआ। ये स्टेज आज सच गया है इस महामुकाबले के लिए। जुबैर, Now this is the important phase of the game. 10 more overs to come. 109 already on the board. And the leg spinner is into the attack. Asim Bashir has picked up a 5 in this innings. And he is leading that player of the tournament awards chart. And listen to the roar. Listen to those buzzes across the ground. The decibels are high. They are getting higher and higher as the game is progressing. Asif Rasool, he's in the news. 51 of 27. What an innings this has been. Asim Bashir to Yawar Bilal. Works it off the legs. One, and brings Asif Rasool back on strike. Now this will be interesting. Leg spinner taking the ball away from the right-hander, and Asif Rasool likes to go inside out with those punches and lofted extra cover drives. Asim Bashir, interesting battle coming up. Good delivery. Gets that turn away from the right-hander, and Asif Rasool is absolutely livid with himself. There was a fielder at cover, sweeping on the offside. There is no one at extra cover. Then there is a long off, and he had got an absolutely huge gap. Tries to sweep. Gets that conventional leg spinner going away from the right-hander. Asif Rasool has to be very careful here. 51 of 29. He has done all the hard work. This time does well. Finds the field, a chance of a run out. Direct hit, not hitting the stumps at the non-strikers, and Asif Rasool gets away with another. He takes a single, moves to the other end, and brings Yawar Bilal on strike. Yawar Bilal shot a boundary towards that square on the onside. Leg spinner turning the ball into his arc. Would he like to go across the line? No, that ball kept low. It was trying to target mid-wicket. That one kept straight with the arm.
did not turn at all. Asim Bashir is a handy bowler. He is not a regular bowler, but he's a handy part-timer. This time quicker, straighter, bunted down the ground for one more. Takes the total to Nelson for the loss of 2 and brings Asif Rasool, brings the end of over number 11. 112 for the loss of 2. Bijbehara Sports Club after winning the toss and batting first. Asif Rasool 52 of 30 and Yawar Bilal is giving him good company at the other end. Is batting on 14 of 11. Crowd in numbers here, and look at the drone. That drone is catching every image across the ground. This is looking brilliant. And listen to the roar of the crowd yet again. The atmosphere is absolutely electric. It's gonna be electric more and more as the game progresses. Nadeem Dar has switched his ends. He's going to bowl from the other end. On strike is the left-hander Yawar Bilal. He's not a massive spinner of the ball, but he bowls wicket to wicket. And Yawar Bilal has got a longer boundary towards the leg side. Will he try to target at mid-wicket? He's got a fielder at long on wideish. He's got a fielder at square leg. And he's got a fielder on the onside, inside the circle at fine leg. This time gets away with from the fielder, but he does well. Diving towards his right, putting his body on the line. Tajamul Baba. And conceding only a single on that occasion. Left hand, right hand combination has been introduced right from ball 1, and this is a very good strategy. Plenty of experience in that dugout of BSC, and they are trying to just keep that headache going. Comes down the wicket, clips it. Onside Manzoor Dar coming from the boundary, restricts the scoring to just 1. Asif Rasool knows now is the time that he's trying to just pace the innings, milking the bowlers around and trying to get that odd boundary going. He's trying to make it big. 52 of 30, and these are good signs for BSC. But Nadeem Dar, he is that kind of a bowler. He varies his pace every now and then. He bowls wicket to wicket. He's not a massive spinner at all, but he concedes less amount of runs. He's a canny bowler. This time slows it down. Smash down the ground. No chance for the field, and that will be 4. That was hit very hard from the batter on that occasion. Gets on top of it. Just smokes it down the ground. Top hand coming into the action and gets that boundary to take Yawar Bilal to 19 of 14. Tajamul Baba. That wideish long off. He goes hard once again in the air, falling short of the fielder. And getting Asif Rasool back on strike with the final ball of the 12th over. Every delivery that Asif Rasool faces is an absolute box office for every spectator who has come on to witness this high-octane clash. Because he has been among the news with his viral videos. He is an absolute character, Asif Rasool. This time goes across the line, misses the line of the ball completely. It's a dot to finish. 12 overs done, Bijbehara Sports Club. A 119 for the loss of 2. 8 more overs to come. And Asif Rasool is all set for a big one today. कोई दोहराई इसमें नहीं है. आसिफ रसूल आज इस बड़े मैच पे, इस बड़े मुकाबले में छाए हुए नजर आ रहे हैं. और कमाल की पारी अब तक 32 गेंदों से 53 रन बना के नाबाद. ओवर समाप्त. 12 के बाद 119, 2 विकेट के नुकसान पे. अब आए गेंदबाजी के मोर्चे पे. आसिम बशीर को गेंद सौंपी गई है. विकेट टेकर गेंदबाज हैं आसिम बशीर, और अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, जहां बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया इस खिलाड़ी ने की है. गेंद के साथ भी कमाल किया है. विकेट्स निकाली आसिम बशीर ने. खैबर सीमेंट बीपीएल 2024 का ये सेमीफाइनल नंबर 1 है. कश्मीर घाटी की सबसे फेमस लीग, नंबर 1 लीग कहा जाए तो कोई दोहराई नहीं होगी बिजबेहारा प्रीमियर लीग. आसिम बशीर आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे. बल्ला चलाना चाहते थे, बैकफुट पे गए थे, स्ट्रोक खेलना चाहते थे. हल्की सी अपील यहां आसिम बशीर ने जरूर की, लेकिन अंपायर पर इस अपील का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा. अगली गेंद आसिम बशीर द्वारा, और बढ़िया फील्ड,
बहुत बढ़िया फील्ड, आसिम बशीर यू ब्यूटी, तेज स्ट्रोक खेला था लेकिन फील्ड यहां पर देखिए, ये आप देखना चाहते हैं जो अब तक सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के फील्डर से हमने नहीं देखा है। अगली गेंद, यहां भी मौका था सिंगल रोकने के लिए, इस बार रन मिल जाएगा, रन मिल जाएगा। 120, 2 विकेट के नुकसान पे 12.3 ओवर्स का खेल समाप्त होता हुआ सुल्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है इस मुकाबले के अंदर। विकेट एक आध ओवर में नहीं आ गया तो रन्स बहुत ज्यादा बनेंगे, क्योंकि अभी अगर आप करंट रन रेट पे नजर दौड़ाएंगे तो 9.60 के औसत से रन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इस प्रकार से 190 के ऊपर स्कोरबोर्ड नजर आता हुआ, जो कि आसान रहेगा नहीं चेस करने के लिए। आसिम बशीर 3 गेंदे 1 रन, फ्लाइटेड गेंद इनसाइड आउट, ऊपर गई गेंद, दूरी मिल गई यहां पे क्या नहीं, नीचे खिलाड़ी लपकेंगे इस कैच को, आउट होते हुए आसिफ रसूल। बहुत बड़ा विकेट यहां पे, आसिफ रसूल 53 रन की पारी खेलकर वापस जाते हुए तीसरा विकेट मिलता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को। और देखिए विकेट टीकर गोल्डन आर्म सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए आसिम बशीर स्ट्राइक करते हुए अंदर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। परवेज रसूल, ये देख लीजिएगा फ्लाइटेड गेंद थी, इनसाइड आउट जाने का प्रयास, ऐसा लगा एक समय की दूरी मिली, यहां नजर नहीं आया, और इस बार नीचे खिलाड़ी थे। ये डायमेंशंस बहुत बड़े। द प्राइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर परवेज रसूल का आक्रमण होता हुआ विकेट के ऊपर, अब वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। 120, 3 विकेट के नुकसान पे मेरा मानना स्टेज सेट हैं यहां से परवेज रसूल के लिए। आने वाले जितने भी बैटर्स हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी की है टॉप ऑर्डर बैटर्स ने, आसिफ रसूल ने अप फ्रंट रन्स बनाए, उसके अलावा अगर आप देखें पी पराग ने रन्स बनाए, अभी यावर बिलाल रन्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और नए बल्लेबाज परवेज रसूल का आक्रमण होता हुआ विकेट के ऊपर। 120, 3 विकेट के नुकसान पे। The catch on the boundary was important. It was the fielder Manzoor Dar who was under the pump, but the confidence of the man, and Asif Rasool was trying to choose that longer boundary towards extra cover. He was trying to go inside out. He almost got everything on that, but it was Manzoor Dar's brilliance to pluck that one out of the thin air on the boundary. That was the fielder's wicket rather than the bowler's wicket, and the golden arm of Asim has once again struck for Sultan Warriors Baramulla in the 13th over, and they have sent Asif Rasool out. It is going to be the younger brother Parvez Rasool to replace him. The stage is set for him. 7 more overs to come after this, and Bijbehara Sports Club are looking nice and set for a big one. Slip and play. Good delivery. Nice change of the pace. Nice flight through the air. He's trying to bowl above the eye line of the batter, and that is brave. That is the guile from the bowler. And he's bowling against the best all-rounders of India. Parvez Rasool and Asim Bashir has become one of the better bowlers as the time has progressed. Bunted down the ground will be just one. And the pace that he varies in between his deliveries, that is much more noteworthy. He just goes with that quicker one, sort of a flipper that does not turn. Look at that, plenty of air. He was trying to play a much better shot, and look at the catch. Field awareness, boundary awareness, Manzoor Dar, experience, and plucking out a very good catch. 122 for 3, 13 overs done, and Manzoor Bhai is quite eager to say something. कोई दोहराई नहीं, मैं कुछ कहने के लिए बेताब इसलिए हूं क्योंकि आसिम बशीर को कप्तान ने बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया। मेरा मानना कि बहुत जल्दी उन्हें गेंद सौंपनी चाहिए थी इम्तियाज लेफ्टी को, क्योंकि जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में के अंदर विकेट्स निकाली हैं, लगभग 8 विकेट्स ले चुके हैं, और आप उन्हें गेंदबाजी करवा रहे हैं 13वें ओवर के अंदर। मेरा मानना कि पावर प्ले के ठीक बाद आपने गेंद देनी थी आसिम बशीर को, जो नजर नहीं आया कप्तान इम्तियाज लेफ्टी द्वारा। ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो मुझे यहां से नजर आ रहा है।
नया ओवर प्रारंभ होता हुआ। पारी का ये 14 ओवर लेके आ रहे हैं गेंदबाज नदीम डार। यहां सिंगल यावर बिलाल को मिल जाएगा और स्ट्राइक पे पहुंच जाएंगे परवेज रसूल। परवेज रसूल के बल्ले से एक अर्धशतक पहले मुकाबले में वो स्वीप शॉट के जरिए मुकाबला जिताया था सुपर ओवर के अंदर अपनी टीम को, लेकिन आज उनके बल्ले से रन्स की आवश्यकता रहेगी बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब को। 130 3 विकेट के नुकसान पे नदीम डार एक छोटे रनअप के साथ दूर वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए बल्ले का फेस बहुत जल्दी क्लोज कर बैठे थे। ऑन साइड की ओर खेलना चाहते थे, गेंद ऑफ साइड पे और गई। शॉट कवर रीजन पे टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी जब तक गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बनाने का अवसर वहां बल्लेबाज के पास। 124 3 विकेट के नुकसान पे कुल मिला के अगर आप देखें 40 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी, और ये जो करंट रन रेट हैं 9.5 के औसत से रन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं और इस प्रकार से 196 रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद बड़ा शॉट, क्या दूरी मिल गई खिलाड़ी के लिए, चेज गेंद जीत जाएंगे और लीजिए 4 रन मिल जाएंगे यहां बल्लेबाज यावर बिलाल को। आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं आज यावर बिलाल। प्रमोशन इस बल्लेबाज को नंबर 4 पे मिला है, क्या बढ़िया खेल रहे हैं नंबर 4 पे। वाहिद तेली तो अभी आए हैं नहीं बल्लेबाजी के लिए, आके मीर का भी आना बाकी चौके के साथ। 128 3 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद फिर से गेंद गई ऊपर, बहुत दूर गई गेंद, 6 रन के लिए सीधा पहुंचाया सुल्तान के डगआउट में। Half tracker and dealt with. Sweet sound of the bat. Yavar Bilal is playing a blinder. 33 of 22. Have a look at this once again. Nothing wrong with the delivery. Little bit shorter. Rocks back onto the back foot. Picks up the length early and demolishes it over deep mid wicket for a 6. A boundary and a 6 coming of the first 2 deliveries. Nadeem Dar is under the pump. No wickets today for Nadeem Dar as well. And the trump bowlers have been wicketless in this game so far, and that is the big impact on this, and that's why Bijbehara Sports Club are sitting pretty at 134 for the loss of 3 wickets. मैं जानना चाहूंगा आपसे आज जो यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो दाद देनी पड़ेगी बिजबेहारा क्रिकेट एसोसिएशन को कि न्यूट्रल अंपायर्स रखे गए हैं। ये चीज आपने मॉनिटर की होगी शुरुआत में। 2 ऑनफील्ड ऑफिशियल्स जो आज हैं बारामुल्ला से ही है, रफीक जो कि आपको नजर आएंगे बारामुल्ला क्रिकेट फॉर्म के अंपायर हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे सामने एडवोकेट हिलाल भी नजर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी सोच नजर आती हुई क्योंकि कोई एडवांटेज लेना नहीं चाहती हैं। इसके बारे में आपके थॉट्स? Look, there has always been neutrality in the game of cricket. It's a sport where you had to be neutral, you had to be unbiased. But the 2 umpires who were doing a wonderful job here, they did almost in every match, they did an outstanding job, barring 1 or 2 decisions here and there due to human errors. But Bijbehara Cricket Association, and this one is chipped down the ground, might not go to the distance. It has gone into the boundary for 4. 6 4 6 4. This is turning out to be an expensive over. I was talking about Bijbehara Cricket Association. They are taking no chances as far as this game is concerned. Home team playing against Sultan Warriors Baramulla, and they have hired 2 umpires right away from Baramulla, all the way from Baramulla. 2 experienced umpires as well, Advocate Hilal and umpire Mohammad Rafiq. He's one of the experienced umpires from Baramulla cricket form. These 2 are officiating in this match. Nadeem Dar is under some immense pressure. This time he goes down the ground, a full toss, bunted down the ground, and everything is coming from the middle of that bat of Yavar Bilal. It was Wahid Teli in the previous match. It's Yavar Bilal in this match. 14 done. It's 139 for 3. Yavar Bilal, 38 of 24. Parvez Rasool giving him good company at the other end. He's playing the catch-up, 2 of 2. And we haven't seen that happen. It was Bijbehara Sports Club prior to these knockout games. They were relying heavily on Parvez Rasool, but now Parvez Rasool is coming at number 5, number 4, number 6. Such is the depth of the batting. Still to come. It is the man who was playing
a blinder of an innings in the previous match. Wahid Teli sitting in the dugout. They have got Paras Sharma staying in the dugout, Iqbal Abdullah, and who can forget Aqib Mir. Plenty of batting yet to come, but Sultan Warriors Baramulla, 6 overs to come. They need to pull the things up. They need to just bring the run rate down, bring in, squeeze in a couple of quiet overs, pick up 1 or 2 wickets, and get this total below 200. Anything above 200 in a knockout game and a semi-final and against quality bowling lineup of Bijbehara Sports Club is not going to be easy. Asim Bashir into the attack. Wahid Teli rocks back onto the back foot. I beg your pardon, Yavar Bilal sends it through mid-wicket, picks up a couple of more runs and goes into the 40s now. Runs coming top of the order. That has been important from the perspective of Bijbehara Sports Club. Can Asim Bashir strike again? Launches it. He's picked out the longer boundary. He has gone beyond the boundary for a sixer. Massive strike. And look at the length he picks up. He picks the length so early. Saw that ball dropping from the hands of Asim Bashir. He was in position. He smashes it. Over deep mid-wicket this time, quicker one. Times it beautifully behind square on the onside. Picks up 1 more run. Goes to the other end. Moves to 47 up 27. And brings Parvez Rasool back on strike. This is smart batting from Yavar Bilal. Bijbehara Sports Club. They are making merry in the 15th over. They are set for a big one. Field changes. Extra cover. Goes to a square. Goes to a widest position. Parvez Rasool likes to go offside, comes forward. Hofcox plays it away onto the offside safely. Not taking any risks whatsoever. He knows the importance of his wicket. Has to pick up 1s and 2s. Get Yavar Bilal back on strike. Asim Bashir. This time he goes up, another wicket, and that might be a big one. Asim Bashir strikes yet again. That is brilliant bowling from the golden armour. Strikes big, gets Parvez Rasool, gets his second. Bijbehara Sports Club lose their 4th at 148. यही तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आसिम बशीर को आपने पहले क्यों नहीं लाया। यहां परवेज रसूल को भी आउट करने में सफल रहे। दूसरा विकेट मिलता हुआ आसिम बशीर, गोल्डन आर्म सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। क्या कमाल का काम किया है। और देखिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में आज आसिम बशीर की रेस बहुत आगे। अब ये छलांग लगा के आगे पहले मैदान पे जाएंगे, उससे आगे नजर आएंगे आसिम बशीर। कमाल का टूर्नामेंट गटा है, कमाल का टूर्नामेंट। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है इस पूरे प्रतियोगिता के अंदर। आसिम बशीर ने 148 पे चौथा विकेट आउट होता हुआ। आसिम बशीर टंगमर्ग से आते हैं, गुलमर्ग की उन हसीन वादियों के बिल्कुल नजदीक। और क्या कमाल के खिलाड़ी हैं। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि कश्मीर के चंद एक खिलाड़ी जिनको आप पसंद करते हैं, तो मैं अनडाउटली विदाउट एनी डाउट आसिम बशीर को हाईली रेट करता हूं। 148 4 विकेट के नुकसान पे। और परवेज रसूल आउट। अंदर बल्लेबाजी के लिए आकिब मीर, मिस्टर कंसिस्टेंट, अंदर आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि आकिब मीर की अगर हम बात करें, नंबर 3 पे खेलना पसंद करते हैं आकिब मीर, लेकिन आज चुनौती मिली है कि नंबर 6 पे वो बल्लेबाजी करें। 148 4 विकेट के नुकसान पे बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब इस बड़े मुकाबले के अंदर 148 4 विकेट के नुकसान पे। Talking about Asim Bashir is going from strength to strength. In batting, he's been brilliant. And talking about his leg spin, he has learned that art quickly. Once he used to be a non-regular bowler, but then picking up wickets and picking up a 5 in this ground and picking up Parvez Rasool's wicket. And look at that, he flummoxed that on that delivery. Parvez Rasool, he was bamboozled with that delivery. The leg spinning, turning away. Parvez Rasool was trying to go down the ground. It was caught by the keeper. Next ball, this time Aqib Mir rocks back onto the back foot. And Aqib Mir is a surgeon. He's a busy player. He likes to pick up 1s and 2s, pace his innings, and get those boundaries at regular intervals. Over comes to a conclusion. 15 done.
Bijbehara Sports Club. A 1-4-9 for 4. Yawar Bilal, 47 of 27. Aqib Mir, 1 of 1. कोई डाउट नहीं, और इसलिए मैं बात कर रहा था आपसे कि आसिम बशीर को आपने बहुत पहले इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था, जो कप्तान इम्तियाज लेफ्टी ने किया नहीं। और यावर बिलाल क्या कमाल की पारी खेल रहे हैं, आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए, 47 रन कम्पैक्ट नजर आए, बड़े शॉट्स खेलें मिडिल ओवर्स में जहां रन्स की जरूरत थी बिजबेहारा क्लब को। बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन नजर आता हुआ इस टीम के अंदर, इस बड़े मुकाबले के अंदर यावर बिलाल का 149 4 विकेट के नुकसान पे इस बड़े मुकाबले के अंदर अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं यावर बिलाल। 149 4 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर्स का खेल समाप्त होता हुआ। जुबैर जो कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर हमारे साथ जुड़े, कमेंट्री बॉक्स में एक उभरता हुआ कमेंट्रेटर, आपके थॉट्स में जानना चाहूंगा। आखिरी 5 ओवर्स का खेल आना बाकी, 30 गेंदें, कहां तक आप देखते हैं और आज के मुकाबले में किसको सपोर्ट कर रहे हो? See, definitely if Yawar Bilal and Aqib Mir keeps going, then definitely 200 is on from here. Because still they have 5 overs in hand and they can go for the big shots. They have wickets in hand. Parash Sharma is yet to come. Iqbal Abdullah is yet to come. So they have a batting depth. They can go for the big shots. And when we talk about Aqib Mir, he is Mr. Consistent. Bijbehara Sports Club can definitely rely on him. And he will be the man to watch out for from here. And Yawar Bilal equally supporting the way Yawar Bilal is batting throughout, the way he has played those beautiful shots. It will be a game to watch out for. Khyber Cements presenting this year's BPL. We've got so many other sponsors as well. Definitely like to name them as well, and we'll definitely like to thank the sponsors for sponsoring such a beautiful event in this part of the world. 5 more overs to come. The slog overs. Bijbehara Sports Club, they need runs in excess of 50, in excess of 60 from those 5, and Aqib Mir is definitely capable of doing that. Salim Mir comes into the attack. The culprit of dropping a catch, direct hit on the stumps, but Yawar Bilal was through, making his ground in nick of time. 47 of 27. Aqib Mir will do that. He will just chop the balls around, nudge the balls around, pick up 1s and 2s, pace the innings. And now is the time for these two to go for the kill. 150 comes up on the board for Bijbehara Sports Club. In the 16th over, change in field. For the left-hander, square leg. Square leg on the boundary for him. He likes to go offside. Bunts it down the ground. Well fielded by Salim Mir in his own follow-through. On the offside, he's kept a third man wideish on the boundary. There is a fielder who's sweeping on the offside cover point. Long off and long on. Back on the boundary. Salim Mir to Yawar once again cramps him up. That is brilliant bowling from Salim Mir. He's a death specialist. He's on in the 15th over. He will bowl over number 15, over number 17, and probably over number 19. Bijbehara Sports Club, they need to go big from now onwards. 1-5-1 for 4. Aqib Mir and Yawar Bilal. This time dug out nicely in the gap. Fielder in pursuit. I don't think he will get to it. He does well. He does absolutely brilliant on the boundary and saves one for his team. Aqib Mir is a brilliant runner between the wickets. Look at that. Just digging it out from the stumps into the gap. And the fielder from the wideish long on position. Tajamul Baba. Long levers, using his long levers to a very good effect. And saving 1 run for his team. These runs are going to be very crucial in the end. This time, Yawar once again. That is brilliant bowling, brilliant fielding. Salim Mir has been absolutely top-notch in this over, with a ball to come in the 16th. Yawar Bilal is trying to give himself room
He's trying to free that offside. So far, brilliant. Can he finish this over big? He goes high. Fielder tries to get around. It falls in the no man's land. They will come back for 2. That's 50 for Yavar Bilal. Well played, Yavar Bilal. A brilliant innings of 50 from just 31. He gets the acknowledgement from the crowd. Subdued celebration. 16 overs done. Bijbehara Sports Club. A 156 for 4. Run rate of 9.75 will take them to 195. They will definitely want runs in excess of 220, 230. Will they be able to score runs in excess of 200? 4 more overs will decide. Yavar Bilal 50 of 31. Aqib Mir 5 of 3. Salim Mir bowling a brilliant over, just going for 7 in his first. आखिरी 4 ओवर्स का खेल आना बाकी. 24 गेंदें अब तक अभी भी आने बाकी है इस पहले इनिंग्स में. और मेरा मानना कि आज कप्तानी पर भी सवाल उठेंगे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के. और ये देख लीजिएगा, रश जैम लगा हुआ है बाहर. गाड़ियां देख लीजिएगा, बाहर जो सड़क है वहां पे चलने की जगह भी नहीं है. जो मैं अभी नजर पीछे से मैं आ गया था नजर लगा के, और मुझे पता चला कि वो जगह नहीं है वहां पे गाड़ी की और चलने की जगह नहीं है. इतनी ज्यादा गाड़ियां नजर आते हुए, इतने ज्यादा लोग मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं, और आज आपको कहीं जगह बैठने की मिलेगी नहीं इस मैदान के अंदर. आसिम बशीर पिक अप द बॉलर्स रहे. कमाल का स्पेल. 17 रन और 2 विकेट आखिरी ओवर करते हुए. कमाल का ये स्पेल. लेकिन मैं बात कर रहा था सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के कप्तानी पर भी आज सवाल. कदमों का अच्छा इस्तेमाल. डाउन द ग्राउंड का इस बार वहां पीछे खिलाड़ी मौजूद, दूसरे की मांग रहेगी और आसानी से दूसरा रन भी पूरा करेंगे, क्योंकि आसिम बशीर को आपने लेट गेंदबाजी करवाई. सलीम मीर को बहुत देर बाद आपने इस्तेमाल किया. ये कुछ चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है. आसिम बशीर आज पिक अप द बॉलर्स. हालांकि आप चाहेंगे सुल्तान के फैंस कि आज आसिम बशीर का बल्ला गरजे. गेंद के साथ तो ठीक ठाक कमाल किया है. 159 पे 4. पलट कर स्ट्रोक खेला. खिलाड़ी पीछे, खिलाड़ी नीचे, और लीजिए एक और विकेट बाहर. आसिम बशीर यू ब्यूटी. एक और विकेट. तीसरा विकेट मिलता हुआ. क्या बढ़िया स्पेल है ये आसिम बशीर का. 159 पे 5वां झटका लगता हुआ बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब को. और देखिए बहुत मुश्किल परिस्थितियों के अंदर गेंदबाजी की आसिम बशीर ने, लेकिन विकेट्स निकाल के दिए टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी को. सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को अगर 200 से नीचे रोकना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है वो रहेगा आसिम बशीर का. 3 विकेट से इस मुकाबले के अंदर मैन ऑफ द टूर्नामेंट की सूची में अब बहुत बड़ी छलांग लगा के आसिम बशीर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. 159, 5 विकेट के नुकसान पे माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है. जो जो मुकाबला आगे बढ़ेगा आप और भी लोग मैदान के अंदर देखेंगे. इतना अगर आप देखेंगे कि मैदान के अंदर जो दर्शक हैं बहुत ज्यादा तादाद में, करीबन 10,000 से ज्यादा लोग आज मैदान के अंदर मैच देख रहे हैं, और बाहर भी बहुत सारी तादाद में लोग अभी अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं. आसिम बशीर का कमाल का स्पेल. 3 विकेट 19 रन अब तक इस गेंदबाज ने. 16.4 के बाद 159, 5 विकेट के नुकसान पे एक अच्छा कमबैक नजर आता हुआ सुल्तान की ओर से. 10,000 कर दीजिएगा आज बिजबेहारा प्रीमियर लीग पे, क्योंकि इसके बाद भी 3 ओवर्स का खेल आना बाकी है. नए बल्लेबाज अंदर आए हैं. वाहिद तेली को आज नंबर 7 पे कप्तान ने भेजा है. क्या कमाल का फॉर्म वाहिद तेली का इस टूर्नामेंट के अंदर नजर आया है. 70 की कमाल की पारी पिछले मुकाबले के अंदर, लेकिन आज पायदान देखिए 7वें नंबर पे बल्लेबाजी करने का अवसर मिला है, और ऐसे में उनसे बड़े शॉट्स की उम्मीद रहेगी. अगली गेंद आसिम बशीर. हवा में गई है गेंद. लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, दूसरे की मांग रहेगी. बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करते हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे यावर बिलाल, और 2 रन यहां मिल जाएंगे. और तीसरा रन भी पूरा करते हुए आसिम बशीर हालांकि नाखुश नजर आते हुए. यह आज दिन अच्छा नहीं रहा है फील्ड में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का. 162, 5 विकेट के नुकसान पे
16.5 ओवर्स का खेल समाप्त। 19 गेंदों का खेल आना बाकी। सामने आकिब मीर रहेंगे 6 के निजीगत स्कोर पे। क्या बढ़िया गेंदबाजी आसिम बशीर देखने को मिली है उनकी ओर से। 3 विकेट्स, सिर्फ 30 रन कंसीड किए हैं। उनका स्पेल समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे नजर दौड़ाएं। लाइटनिंग क्विक बिटवीन द विकेट्स। आकिब मीर और वाहिद तेली इस मैदान को बहुत खूब जानते हैं। 164, 5 विकेट के नुकसान पे 17 ओवर्स का खेल समाप्त होता हुआ, लेकिन ये रन चेज 190 के ऊपर ही रहने वाला है। आज नजरें और निगाहें तजमुल बाबा पे अप फ्रंट और आसिम बशीर पे रहने वाली है, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों में वो क्षमता की गेम को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। खासकर तजमुल बाबा, बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत, लेकिन ये आसान रहेगा नहीं। सामने इकबाल अब्दुल्ला, सामने परवेज रसूल, आसिफ रसूल, आकिब मीर और उसके अलावा सुमित माथुर नजर आएंगे, संत बख्श नजर आएंगे, पारस शर्मा। Asim Bashir's brilliant figures of 3 for 24. Brilliant work with the ball. And he has staged a comeback for Sultan Warriors Baramulla. Bijbehara Sports Club 164 for 5. They need a go from here on. Akib Mir and Wahid Teli. Wahid Teli, he is a brilliant striker of the ball. It's not about wild slogging. He takes calculated risks, mixes aggression with caution, and uses the field, uses those acres of space brilliantly. And running between the wickets is top-notch. 1 ball, he's batting on 3. Salim Mir has been a difficult proposition in the death overs. Wahid Teli on the pads, leg by. Good delivery, good bowling. He's cramping the batsmen up. He's not giving them the room. He's not giving them the pace. Under the circumstances for Sultan Warriors Baramulla, this has been brilliant. Bijbehara Sports Club, they need boundaries in this over. Akib Mir, oh, that is a horrible delivery. That will be a no ball. Just outside that line which belongs to the 22 yards, and that's a no ball, and that's a free hit. Wahid Teli is at the other end, and Akib Mir, free hit coming up, gets away with that. That's brilliant bowling once again, tucking the batsman up, bowling onto the pads, following him up beautifully on that occasion, and bowling pace on that. This has been some exceptional bowling in the death by Salim Mir. He's gone for 8 so far. He's bowling his second. Bijbehara Sports Club. He needs runs. Trying to scoop that once again. Nothing coming off the bat. Another leg by. So far 3 leg bys and a no ball. Only 4 runs coming of the first 3 balls. What a comeback, what a turnaround this has been from Sultan Warriors Baramulla. Akib Mir and Wahid Teli, they are eager to get those boundaries and sixes. Goes offside, finds the fielder yet again. That is outstanding stuff from Nadeem Dar, outstanding stuff from Salim Mir, outstanding stuff from Sultan Warriors Baramulla. Bijbehara Sports Club, 169 for 5. Can they get to 200? Castles him with that brilliant delivery. The man who got 70 odd in the previous game has to walk back for just 3 or 4. Salim Mir has done it for Sultan Warriors Baramulla. He picks up a wicket, and Bijbehara Sports Club lose their 6th at 169. Iqbal Abdullah, the man who is coming to replace Wahid Teli. Wahid Teli was trying to give himself room. He was trying to fetch a boundary towards mid-wicket, closing the bat face early. The ball comes, sneaks through, and dislodges the stumps to give Salim Mir his first. Projected score still looks 190. Look at that. Brilliant line, brilliant length.
roll of the fingers on the ball. And Wahid Teli was found wanting on that occasion. Iqbal Abdullah has got plenty of experience. He can strike big. He's got that capability of hitting the long ball. But what a comeback this has been. At around the 15th over, they were 148 for just 3. Picking up 3 important wickets and restricting the total below 170 in those 3 overs, almost 3 overs with 1 ball to come. Salim Mir is bowling his second. So 1 for 9 so far. Can Bijbehara Sports Club get those boundaries? Iqbal Abdullah. For Iqbal Abdullah, he has placed a fielder at long off. There is a fielder at square leg. Fine leg is gonna be inside the circle. Third man on the boundary. Mid off up inside the ring. And his smart captaincy long on back. Mid off up. And he has got the point fielder back on the boundary. Apart from that, fielder at extra cover inside the ring. Salim Mir for the final time in his second to Iqbal Abdullah. Full toss, Pacey beats him. And the wicket-keeper's pads were hit with the ball. That was a pacey delivery, full toss. But Iqbal Abdullah was not able to lay bat onto that. It is a bye to finish over number 18. Bijbehara Sports Club 170 for 6, still searching that 200 mark. कुछ हद तक तो वापसी माननी पड़ेगी यहां सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की ओर से, क्योंकि पिछले 2-3 ओवर से विकेट्स निकाली हैं. ये टोटल तो 220 नजर आ रहा था जब बल्लेबाजी कर रहे थे आसिफ रसूल और यावर बिलाल, जिस अंदाज से उन्होंने गेम को आगे चलाया था. लेकिन कमाल की वापसी, खासकर आसिम बशीर ने 3 विकेट्स अपने स्पेल में निकाल के दिए. कुलविंदर सिंह के हाथ में गेंद, मीडिया सेंटर एंड से वो गेंदबाजी करेंगे. आखिरी के 12 गेंदों का खेल आना बाकी है. कहां तक आप इस टोटल को देख रहे हैं? प्रोजेक्टेड स्कोर इस रफ्तार से 190. और मेरा मानना ये आसान रन चेज रहने वाला नहीं है. आज सुल्तान वॉरियर्स के बैटर्स को अप फ्रंट चमकना पड़ेगा. वसीम काचरू की बात करें, आसिम बशीर की बात करें, तजमुल बाबा, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है रन चेज के अंदर. 170 इससे पहले यहां चेज हुआ नहीं है नॉकआउट स्टेज में. ऐसे में कुलविंदर सिंह गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. वो गेंदबाजी करेंगे ठीक मीडिया सेंटर एंड से. उनके सामने बल्लेबाज इकबाल अब्दुल्ला, आईपीएल में हिस्सा रह चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का. इस बार बल्ला चलाया, पीछे खिलाड़ी मौजूद. रन यहां 1 मिल जाएगा. सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए कुलविंदर की अगर हम बात करें, 1 विकेट आज मिला है अपना आखिरी ओवर करते हुए. 27 रन कंसीड किए हैं, लेकिन आज विकेट बहुत अच्छा दिखा है. बल्ले पर आज गेंद नजर आई है, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पर आई है. कल ऐसा नजर नहीं आ रहा था. 140 का रन चेज बहुत मुश्किल नजर आया एमआई याकुरा के साथ कि बैटर्स की अगर हम बात करें, वहां तक पहुंच नहीं पाई थी वो टीम. आकिब मीर ऊपर खेला गया शॉट, टाइमिंग उतनी खास है नहीं. नीचे खिलाड़ी ये पहुंच नहीं पाएंगे. इम्तियाज लेफ्टी नहीं पहुंच पाएंगे. दूसरा रन वहां मिल जाएगा, बल्कि आसिम बशीर वहां कवर रीजन पे फील्ड कर रहे थे. 173 रन 6 विकेट के नुकसान पे. 10 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी यहां से. इस पहले इनिंग्स में अगर ये टोटल 190 के ऊपर, तो फिर और चिंताएं नजर आएंगे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के खेमे में. कमाल का शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, डांसिंग डाउन द ट्रैक. ये हैं मिस्टर कंसिस्टेंट आकिब मीर. 4 रन मिल जाएंगे. ट्रेडमार्क आकिब मीर का इस स्ट्रोक चौके के साथ 177 रन 6 विकेट के नुकसान पे. बहुत कम खिलाड़ी आपको नजर आएंगे कश्मीर के अंदर ऐसे शॉट्स खेलते हुए, और इस सूची में पहले पायदान पे आपको आकिब मीर ही नजर आएंगे. अगली गेंद कुलविंदर सिंह की जगह बनाई स्ट्रोक के लिए, वापस इस बार खेला. अच्छी फील्ड वहां अपने फॉलो थ्रू में कुलविंदर सिंह द्वारा. डॉट गेंद निकलते हुए 177 6 विकेट के नुकसान पे. 8 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी. आप जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कितना रन चेज 190 के ऊपर जो रन चेज रहेगा. आसान तो रहने वाला नहीं है.
किस बल्लेबाज के ऊपर आपकी नजरें रहेंगी रन चेस के अंदर सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की ओर से? एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, इस बार डाउन द ग्राउंड गई है गेंद, लॉन्ग ऑन रीजन पे खिलाड़ी, रन यहां एक ही मिल जाएगा। 178 रन 6 विकेट के नुकसान पे। देखिए जो नॉकआउट मुकाबले हुए हैं उसमें जब जब 170 से ऊपर रन्स बने हैं तब तब जो चेजिंग टीम है उनके लिए बहुत मुश्किलें रही हैं। मैं जब शुरुआत में टॉस में बात कर रहा था कप्तान इम्तियाज लेफ्टी से, तो उनका मानना कि मैं एक वाहिद खिलाड़ी था जो टीम में चाहता था कि हम पहले गेंदबाजी करें, और आज देखना पड़ेगा कि क्या उनका निर्णय सही रहता है। जिस सोच के साथ वो आए थे, इम्प्रोवाइजेशन, इकबाल अब्दुल्ला, लीजिए 4 रन मिल जाएंगे, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिवार्ड, 4 के साथ 182 6 विकेट के नुकसान पे 19 ओवर्स का खेल समाप्त। $19 overs done, 182 for 6, and Iqbal Abdullah showing the experience to everyone who has come out to witness this high octane clash, just using the pace of the bowler and ramping it over the keeper's head. You can't set field over there, and that is a boundary to close over number 19. और एक बात जो मुझे याद आ रही है, 2016 में ये खेलते थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ, इसी मैदान पे लगभग आते थे और इस तरह के शॉट्स खेलते थे। परवेज रसूल के साथ खेले हैं, आईपीएल के अंदर अंडर 19 का हिस्सा रह चुके हैं इंडियन टीम में। विराट कोहली की कप्तानी में खेलने का एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी के पास, लगभग 10 साल खेले हैं विराट की कप्तानी में। अंडर 19 की अगर हम बात करें, उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स में भी लगभग 5-6 साल खेले और ये एक्सपीरियंस होता है। आखिरी ओवर का खेल आना बाकी, गेंद है हाथ में सलीम मीर के, 182 6 विकेट के नुकसान पे। सामने इस बार रहेंगे आके मीरा, खराब वहां पे विकेट कीपिंग, बल्कि बहुत दूर गई थी, ड्राइविंग एफर्ट नजर आया था विकेट कीपर वसीम काचरू द्वारा, लेकिन ये बहुत दिशाहीन गेंद, बहुत खराब गेंद। ये तो आपने तोहफे में 5 रन दिए। 5 runs coming of the first ball, no ball will be counted, and Salim Mir up to that point was up to the mark, straying down the leg side and gifting 5. This one, he goes inside out in the air, will be just one because man at the boundary has done outstanding job cutting the ball and restricting the batsman to just one. Now it will be Iqbal Abdullah. Will he just go for that improvisation once again? 4 more balls to come. Okay, but 5 more balls to come in this over. 187 already on the board. Can they get to that magical number of 200? Iqbal Abdullah outside the off stump, flashy blade. Beaten outside the off stump. Salim Mir is bowling brilliant lines and lengths. Iqbal Abdullah was trying to just, first up, might have been in his mind to play that cheeky improvised stroke. Salim Mir is reading his mind brilliantly. Clipped. Aqib Mir will not come back for 2, or will he? He is coming back. He's rushing back for 2 more. Iqbal Abdullah with those 2 runs takes the total of Bijbehara Sports Club to 189, and just 7 runs coming off the first 4 balls. 2 more balls to come, and the first ball wasn't a wide, it was deflecting of the pads. Salim Mir for the 5th time in this over. Outside the off stump, short. Chance of a run out at the other end, hits. And Iqbal Abdullah has to walk back. But what is important from the perspective of Bijbehara Sports Club is that Aqib Mir is back on strike for the final delivery of the over. And look at that, brilliant work done from behind the stumps by Wasim Kachru. Just 1 more ball to come. Bijbehara Sports Club losing their 7th, 189 for 7. Talking about Salim Mir and talking about the comeback of Sultan Warriors Baramulla. These 2 bowlers, Salim Mir and Asim Bashir in particular, they have done an exceeding job of staging a comeback, and they are about to restrict Bijbehara Sports Club below that magical figure of 200.
This will be a moral victory for Sultan Warriors Baramulla going into the chase. And the momentum and the moral victory is going to be very important. Aqib Mir is going to face the final delivery of Salim Mir. He's bowling his third. The final delivery of the innings of Bijbehara Sports Club. Salim Mir is third over. The final delivery of his third. Long on, deep mid wicket comes inside the ring because he tries to go inside out. That's why there is a fielder in the sweeper position on the offside. Apart from that, wideish long off. Final delivery of the innings coming up. Salim Mir to Aqib Mir. Castles him with the final delivery. You miss, I hit. Salim Mir gets his second. Aqib Mir was trying to scoop this one. The furniture has been dismissed and Bijbehara Sports Club have been restricted to just 189 for the loss of 18-20. Sultan Warriors Baramulla staging a very good comeback. Now they need 190 from 20. Have they got this under their belt? Will they chase this down and march into the finals, or will Bijbehara Sports Club go into another final of Khyber Cements presenting Bijbehara Premier League Edition 4? A question for you, Manzoor Bhai. Will 189 be enough for Bijbehara Sports Club to restrict Sultan Warriors Baramulla and march into the finals? देखिए, मेरा मानना 190 बहुत रन्स हैं सेमीफाइनल के अंदर. चेजिंग उतना आसान तो रहने वाला है नहीं सुल्तान के लिए, बट मेरा मानना कि कुछ भी घट सकता है. क्रिकेट है, एज वी से, गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज. सुल्तान के पास वो दमखम, वो काबिलियत है ये रन चेज करने की. इंटरेस्टिंग रन चेज ऑन कॉर्ड्स. जुड़ेंगे आपके साथ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और रन चेज के साथ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 190. जुड़ेंगे आपके साथ ग्राउंड में, लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे इस मुकाबले में. जुड़ेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहली इनिंग्स है वो समाप्त हो गई है. 190 रन्स का टारगेट मिला है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को ये बड़ा मुकाबला अपने नाम करने के लिए, सेमीफाइनल अपने नाम करने के लिए. मेरे साथ जुड़े हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट लाल मोहम्मद गनाई साहब. इनसे इनके विचार जानना चाहेंगे. सबसे पहले आपके कमेंट्स, 190 प्रेशर गेम, सेमीफाइनल किस तरह देखते हैं?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि सेमीफाइनल बिल्कुल फाइनल से पहले की ज़ेरोक्स कॉपी होती है, प्रेशर गेम है। और पिछला मैच जो कल गया था यहाँ पर 140 भी चेज़ नहीं हुआ, तो मुझे लगता है उनके पास बैटिंग लाइन बहुत बढ़िया है। लेकिन अपोजिट की अगर मैं बात करूँगा, परवेज़ रसूल जो कि इंटरनेशनल आइकॉन है, उसके साथ साथ आसिफ रसूल की बॉलिंग को फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। टू मी 190 इज़ ए बिग आसिफ टू। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। आसिम बशीर बहुत बढ़िया खेले हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर। वसीम काचरू ने अप फ्रंट रन्स बनाए। तजमुल बाबा के पास वो काबिलियत बड़े शॉट्स खेलने की। किस तरह आप देखते हैं ये जो शुरुआती बैटर्स से इंटरेस्टिंग रहेगा रन चेज? देखिए, दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। अगर मैं बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब की बात करूंगा, बीच में कुछ ओवर जिनमें कम रन आए, लेकिन अगर मैं अपोजिट की बात करूंगा, उन्हें हर ओवर में देखना है कि 10-10 रन हमें लाने। उस सूरत में वो बड़े शॉट के लिए भी जा सकते हैं और बीच में उनके विकेट भी गिर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, 190 ऑन दिस विकेट इज ए बिग आस्क। आपके थॉट्स इस लीग के हवाले से पर्टिकुलरली मैं लेना चाहूंगा। अनडाउटली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लीग इन कश्मीर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो डिसिप्लिनेड क्राउड नजर आया यहाँ पे, कोई इंटरप्शन क्राउड की ओर से नहीं, जो कि हमें बाकी मैदानों के अंदर नजर आता है। देखिए, अगर मैं बात करूंगा एक इंटरनेशनल आइकॉन, अगर मैं कहूँगा एम्बेसडर जेन के, उनकी नज़र रहती है इस लीग पर। आप देखिए, चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि ये क्रेडिट जाता है बीसीए को, बिजबेहारा क्रिकेट एसोसिएशन को। जिस तरह के क्राउड बहुत ज़्यादा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट एक दर्शक भी बीच मैदान में नहीं गया, तो ये क्रेडिट आप लोगों को जाता है। अगर मैं कहूँगा एज ए कमेंट्रेटर, आपने ज़बरदस्त मेहनत की अपनी कमेंट्री के ज़रिए। और उसके साथ साथ बीसीए ने बहुत ज़बरदस्त लीग, अगर मैं इस लीग की बात करूँगा, टू मी, अगर लोग गलत न समझे, नेक्स्ट आईपीएल। मैं आपसे आखिरी सवाल जाते जाते पूछना ज़रूर चाहूँगा, कोई ऐसा बैटर आपकी नज़र में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के इस लाइन अप में आपको नज़र आता है, अगर चमक गया तो मैच छीन सकता है बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब? देखिए, मैं आपको बताते चलूँ कि अगर मैं पॉइंट्स लिहाज की बात करूँगा, तो पॉइंट्स टेबल पर वसीम आसिम बशीर पहले नंबर पर आते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट मैं उनके साथ जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच लाल साहब। It was my pleasure to talk a legendary commentator from. No. You are the legend. Thank you very much. आप हमारे साथ लाइव थे। ये थे हमारे साथ लाल मोहम्मद गनाई साहब जो बात कर रहे थे इस रन चेज के हवाले साथ। जुबैर है मेरे साथ। जुबैर, आप कमेंट्री कर रहे थे, आपके थॉट्स भी मैं लेना चाहूँगा। रन चेज डिफ़िकल्ट रहा है, जितने भी हमने अब तक मुकाबले देखे हैं, नॉकआउट स्टेज के मुकाबले बड़े मुश्किल हुए हैं रन चेज करना यहाँ पे। किस तरह आप देखते हैं 190 ए डिफ़िकल्ट टास्क? See, when we talk about the dimensions of the ground, ये हमें पता ही है कि कितना बड़ा ground है, तो 190 on any given day it's not going to be easy. Seeing the dimensions of the ground, those 70-80 meters की boundary सामने है. If we talk about the scare boundaries, it's 60 to 65 meters, so it's quite difficult. It will be difficult कि इतना बड़ा स्कोर जो है 190 का, इट विल बी डिफिकल्ट ऑन दिस ट्रैक। हाउएवर हम ये कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते कि सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की जो टीम है, दे हैव एक्शन पैक्ड बैट्समैन। व्हेन वी टॉक अबाउट आसिम बशीर, व्हेन वी टॉक अबाउट वसीम कासरू, व्हेन वी टॉक अबाउट इम्तियाज लेफ्टी, तजम्मुल बाबा, सो एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है। कंटेस्ट तो बराबरी का है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कौन बनता है सिकंदर यहाँ पे आज के इस गेम में। थैंक यू वेरी मच जुबैर। दैट्स ऑल डाउन हियर। बात कर रहे थे हम इस रन चेज के हवाले से। एंड अगर आप मुझसे पूछते सवाल तो डेफिनेटली मेरी नज़रें आसिम बशीर, तजम्मुल बाबा और वसीम काचरू के ऊपर अप फ्रंट रहेगी, क्योंकि उन तीनों खिलाड़ियों के पास वो काबिलियत है कि मैच को बहुत जल्दी समाप्त कर सकते हैं। बड़े रन्स बनाने की काबिलियत तीनों बैटर्स में। इंटरेस्टिंग रहेगा रन चेज ऑन कॉर्ड्स। हम जुड़ेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all the viewers back with the chase of Sultan Warriors Baramulla. 190 is going to be that magical number. If they surpass that, they get even. If they even get to that, it will be their match. They will march into the finals, but at what stake? They have to bat exceedingly well, because Bijbehara Sports Club have got an absolute variety in their ranks. And look at the crowd. It is humongous. It's huge. Not an inch of space left in those stands. They are absolutely filled to the brim. The atmosphere is abuzz. It's electric. The game is an high octane encounter. Bijbehara have done well. They have scored 189. 189 is a very good score in a knockout game, and that too in a semi-final. The two batsmen from Sultan Warriors, Tajamul Baba and Asim Bashir, have made their way into the middle. It's going to be Asif Rasool to bowl from the media center, and as always, he has got a third man inside the circle. He's got a short fine leg inside the circle. Mid-wicket at a catching position. Mid-off and inside the ring, mid-on on the boundary. First ball in the air. Oh, fall short of the fielder. The two brothers were converging on the ball. Neither of them gets to the ball. Tajamul Baba gets away with one. Asif Rasool almost bamboozled Tajamul Baba on the very first ball of the chase. Gets away with it. Good delivery. Stump to stump. No room to play with. These 4 overs from Asif Rasool are gonna be very crucial. He's pushed the long on back on the boundary. Mid-off inside the ring. Delivery inside out into the gap, and that will be the first runs on the board. The fielder does well, running all the way to the boundary, restricting the batsman to just 2. Sultan Warriors Baramulla are underway. They need a good partnership top of the order. The atmosphere is absolutely electric. Next ball almost sneaks through. That's brilliant bowling from Asif Rasool. Using the new ball to a very good effect. Getting wickets up front for Bijbehara Sports Club. They have runs on the board. And Asim Bashir is on strike. Changing the field for Asim Bashir. This man is in red hot form. Punches it, finds the fielder. But look at that middle of the bat. It almost pinged up the middle of the bat. Cordon of fielders on the offside. 1, 2, 3, 4, 5 fielders. Asim Bashir pulls this one and pulls this one with disdain and picks up the first six of the match for Asim Bashir. First 6 of the innings for Sultan Warriors Baramulla. Ends the first over on a high. They are 9 without loss, and Asim Bashir gets himself going with a second delivery of his innings. 6 of 2 Tajamul Baba, 3 of 4 Sultan Warriors Baramulla. After 1 are 9 without loss. स्वागत है आपका रन चेज के अंदर, और रन चेज के लिए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के दोनों सलामी बल्लेबाज आसिम बशीर और तजमुल बाबा की जोड़ी मैदान के अंदर। और पिछला शॉट ने साफ साफ दर्शाया कि किस फॉर्म में हैं आसिम बशीर, और इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर उनका बल्ला सर चढ़ के बोला है
और ऐसे में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला उम्मीद आज एक और बड़े रन्स की आसिम बशीर के बल्ले से जरूर करेगी, लेकिन यहां स्पिन से ही काम आगे चलाना पड़ेगा। तेज गेंदबाजी ज्यादा नजर नहीं आएगी। इकबाल अब्दुल्ला के हाथ में गेंद और वो प्रारंभ करेंगे दूसरा ओवर दूर वाले छोर से। पहले ओवर से 9 रन। अगर इस रन चेज के आसपास सुल्तान को भटकना है तो शुरुआती इन बैटर्स का योगदान बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला। तजमुल बाबा और आसिम बशीर के अलावा वसीम काचरू। पहली गेंद इकबाल अब्दुल्ला की, बहुत बढ़िया गेंद। और ये सोच रही है बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब की कि स्पिन का जलवा बिखेरा है पिछले एक आध मुकाबलों में। तेज गेंदबाजी तो नजर नहीं आई है मुझे। इकबाल अब्दुल्ला मिड ऑन पे खिलाड़ी, मिड ऑन पे खिलाड़ी तजमुल बाबा। फ्लाइटेड गेंद गई ऊपर, गेंद भी नीचे खिलाड़ी आते हुए, नीचे खिलाड़ी लगभग लपक लिया था इस कैच को। कमाल का एफर्ट नजर आता हुआ वाइडिश मिड विकेट इलाके पे। बाल बच गए। ये गेंद हाथ में आ गई थी, लेकिन आखिरी समय पे बढ़िया एफर्ट वहां पे। 2 रन मिल जाएंगे। फायर वर्सेस फायर कंटेस्ट, दो के साथ घेरा बगैर किसी विकेट के नुकसान के शॉट्स खेलेंगे तजमुल बाबा। इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है, क्योंकि इनकी काबिलियत ही यही है, रोक के नहीं खेलते हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं। अब्दुल्ला चले। इस बार पैड लाइंस पे गेंद, हल्की सी अपील जरूर होते हुए नजर आ रही है, लेकिन निश्चित ही गेंद लेग स्टंप को मिस कर रहे थे। तजमुल बाबा का स्ट्रगल मुझे नजर आया स्पिन के विरुद्ध, उतने खास नजर नहीं आए, लेकिन आज एक चुनौती है, आज एक इम्तिहान है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की इस बैटिंग यूनिट का। फाइनल्स तक जाने के लिए 190 रन का पीछा करते हुए नजर आ रही हैं। इकबाल अब्दुल्ला एक छोटे रन अप के साथ। अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद, फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और घुमाव नजर आता हुआ। आसान रहने वाला है नहीं यहां सामने इकबाल अब्दुल्ला के ऊपर आक्रमण करना। तजमुल बाबा सामने, इकबाल अब्दुल्ला इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड की ओर, वो अंदरूनी किनारा लेते हुए गेंद पहुंची फील्डर के पास। वो बड़ा शॉट जरूर अटेम्प्ट किया था इस ओवर में, लेकिन बाल बच गए। वहां वो ड्राइविंग एफर्ट नजर आया, उसके बाद खामोश रखा इकबाल अब्दुल्ला ने इस ओवर में। अगली गेंद और फिर से बल्ला चलाने का प्रयास, इस बार रेंज से दूर रखा तजमुल बाबा के। वाइड बॉल का इशारा एडवोकेट हिलाल द्वारा नजर आता हुआ। इसके चलते 12 बगैर किसी विकेट के नुकसान के दूसरा ओवर इकबाल अब्दुल्ला आखिरी गेंद के साथ। यहां हवा में गई है गेंद, पीछे कोई खिलाड़ी है नहीं। बैट का फेस बहुत जल्दी क्लोज कर बैठे थे। ये अच्छा ओवर, ओवर से मात्र 3 रन ही आते हुए 2 ओवर्स का खेल समाप्त। 12 रन सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला बगैर किसी विकेट के नुकसान के। देखिए, मैंने शुरुआत में भी बात की, मैं अब भी वही बात पे फिर से आना चाहूंगा कि अगर आप इस रन चेज का पीछा करना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूशन तजमुल बाबा, आसिम बशीर और वसीम काचरू का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस रन चेज के अंदर। शुरुआत में विकेट्स नहीं देने की कोशिश रहनी चाहिए सुल्तान वॉरियर्स के दोनों बैटर्स के। अगर आप पहले 5-6 ओवर्स में रन्स बनाते हैं, विकेट्स हाथ में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप इस रन चेज को बैक करेंगे। अगर 2-3 विकेट्स पावर प्ले के ओवर्स में गई तो फिर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगे। आसिफ रसूल मीडिया सेंटर एंड से अगला ओवर, यहां पे गेंद लगी है पैड पे, अपील जरूर होती हुई, लेकिन अंपायर ने साफ नकारा इस अपील को। आसिम बशीर, इस खिलाड़ी के पास जो रेंज ऑफ शॉट्स है, एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया खिलाड़ी। Asif Rasool, good delivery, beautifully bowled and equally well played. Chance of a run out, hits the stumps on full, but Asim Bashir had dragged his bat into the safety of his crease. No harm done. A single has been fetched that takes Sultan Warriors Baramulla to 13 for none. This is over number 3 in progress. Sultan Warriors, they need a very good start to hunt down 190. Asim Bashir is looking in red hot form. Tajammul Baba is looking struggling.
Next delivery. Good delivery. Once again, beautifully played. Punched it straight to the fielder. And Tajamul Baba more often than not has picked up fielders. Picking out the man in the deep almost. Iqbal Abdullah bowling that loopy delivery outside the off stump. Once again picks out the fielder. So nothing significant coming from the bat of Tajamul Baba. He likes pace on ball, but Bijbehara Sports Club, they have got a bunch of spinners. Spinners every now and then. Spinners bowling in the power play, spinners bowling outside the power play in the middle overs, and spinners closing the game. Variety. This time goes onside through mid-on. Will pick up a single. Tajamul Baba, struggle continues. Misfield, that is not required at all. Asif Rasool will not be a happy man after this. Sultan Warriors Baramulla, 15 for none with one more ball to come in the third over. Tajamul Baba needs to bat sensibly. This time punches it, finds Yawar Bilal at extra cover, ends the over with a dot. 3 overs done, it's 15 for none. Left arm spinner bowling from the other end in the power play. A right arm off spinner bowling from the media center end in the power play. Iqbal Abdullah's experience. The first over was brilliant. Giving away only 3 runs in that over. Asif Rasool's 2 over costing Bijbehara Sports Club only 12. 3 overs of the power play have been bowled. A run rate of 5 runs in over have taken them to 15. Asim Bashir, he has to take the onus on himself. Now this will be interesting. Iqbal Abdullah having a deep mid wicket on the boundary, having a deep square leg on the boundary. I beg your pardon, deep mid wicket and a long off on the boundary for Asim Bashir. Asim Bashir's bat has done the talking in this tournament. Short ball, hoiked, and that has gone many a mile. Half tracker and Asim Bashir picks up bones out of that. That is brilliant strike. Picks the length early, goes deep into his crease. And the bat, those brilliant arms, the flourish of the bat has taken it over deep square leg, smoked for 6. Iqbal Abdullah, after that, might be a worried man. Dropping the length, he had a deep mid wicket in place, but Asim Bashir, the form he is in, was never gonna miss onto that. Brilliant strike. And the ball has gone for a hiding. Now it has come back. Asim Bashir moves to 13. Iqbal Abdullah he has to be very careful with his line and with his length. He tried that half tracker that went out into the crowd. What is he gonna try the next time? Advocate Hilal and Mohammad Rafiq, the 2 umpires from Baramulla, have been hired for this match to do the officiating work as neutral umpires. They belong to Baramulla though. But BCA have done an exceeding job in having the umpires from Baramulla, so that the game is fair and square. Iqbal Abdullah to Asim Bashir. This time goes to the other direction and caresses it for 4 more. Asim, incredible. Bashir is looking in brilliant form. Got 100 at Kupwara, came back, played a brilliant knock here, went back, played knocks all around the valley. He's looking in ominous touch. 17 of 6, Iqbal Abdullah has to be careful.
Shout for LBW. He's pleading. He's pleading. That probably was pitching outside the leg on that occasion. Advocate Hilal, the umpire in question on that occasion, Iqbal Abdullah, would have a look. We will definitely want to have a look on this. He was trying to sweep it from the stumps. Has it pitched in line? It's pitched in line for sure. Was it going down the leg side? That is the question. And according to the umpire, it was. Asim Bashir survives. This time Tajamul Baba lifts this one inside out into the crowd for 6. Fireworks earlier on. Tajamul Baba taking a leaf out of Asim Bashir's book. Demonstrates to Asim Bashir, if you're hitting 6s, so can I. Plays an incredible shot over extra. Iqbal Abdullah in fire, under fire. Knocks it for no runs. It's a dot ball. It's a rare dot ball in this over. Iqbal Abdullah has gone for 16 with a ball to come in the 4th over. Sultan Warriors Baramulla are off to a flyer. Can Iqbal Abdullah finish this over strongly? Good delivery to finish. A dot to finish the 4th. Sultan Warriors Baramulla 32 for none. In search of wickets is BSC. Can they pick up a wicket? Whom are they looking forward to? It's going to be Asif Rasool to continue. चार ओवर्स का खेल समाप्त हो गया है। 32 रन बोर्ड पे लगे बगैर किसी विकेट के नुकसान के। अच्छी शुरुआत नजर आते हुए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की ओर से आसिम बशीर और तजमुल बाबा। बढ़िया शॉट, बैकफुट पे गए, रॉक सॉलिड स्क्वायर कट, 4 रन। आसिम बशीर, क्या कमाल का शॉट, टाइमिंग देखे इस बार, स्टैंड एंड डिलीवर। हाथ बहुत तेज चलते हैं इस खिलाड़ी के। चौके के साथ 36 बगैर किसी विकेट के नुकसान के 8 गेंदों पर 21 पे पहुंचे हैं आसिम बशीर। रोकना बहुत मुश्किल आसिम बशीर के बल्ले को, बहुत खतरनाक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज है आसिम बशीर की। अगर हम बात करें 36 बगैर किसी विकेट के नुकसान के आसिम इनक्रेडिबल बशीर बहुत बढ़िया फॉर्म से गुजर रहे हैं। अगली गेंद इस बार लगी गेंद अपील होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंपायर ने एक बार फिर इस अपील को नकारा, साफ वहां पे नकारा। रफीक अहमद रन के चलते 37 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। तजमुल बाबा और आसिम बशीर की जोड़ी बहुत बढ़िया काम करते हुए इस रन चेज में। अगली गेंद ऊपर गई गेंद, दूर गई गेंद, 6 के लिए गई गेंद। शोर सुन लीजिएगा जरूर। कमाल का कनेक्शन, सॉलिड कनेक्शन। तजमुल बाबा के बल्ले से 6, 43 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। एक तरफ से इकबाल अब्दुल्ला तो दूसरी तरफ से यहां आसिफ रसूल के सामने आक्रमण होता हुआ नजर आ रहा है। फीलिंग द हीट एट द मोमेंट बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब। 43 बगैर किसी विकेट के नुकसान के 5वां ओवर। आखिरी गेंद आसिफ रसूल की इस ओवर की, और इस बार लॉन्ग ऑन रीजन पे गई है गेंद। पीछे खिलाड़ी रहेंगे, रन यहां मिल जाएगा। दौले की दूसरे की मांग जरूर की थी आसिम बशीर ने, लेकिन सिंगल मिल जाएगा। ओवर समाप्त होता हुआ 5 के बाद 44 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। रन चेज इज ऑन, कहीं मत जाइएगा। आसिम बशीर और तजमुल बाबा की ये विस्फोटक शुरुआत नजर आते हुए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए।
किस गेंदबाज की तरफ देख रहे हैं कप्तान आसिफ रसूल? जी हां, आकिब मीर को गेंद सौंपी गई है। विकेट टेकर आकिब मीर, और विकेट की आस रहेगी, विकेट की उम्मीद यहां रहेगी बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब को, जबकि इसी अंदाज से आगे बढ़ना चाहेंगे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। बात अगर करें परवेज रसूल का भी आना बाकी, बहुत वैरायटी इस गेंदबाजी में, लेकिन स्पिन से ही मुकाबले जीते हैं यहां। अगर हम बात करें बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब ने, इसलिए वो हावी आपको स्पिन ही नजर आएगी। आकिब मीर दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे। 44 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। क्या वातावरण यहां नजर आता हुआ। नीलेंद्र सू स्पोर्ट्स स्टेडियम खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। हर एक शॉट और विकेट के साथ तालियों की गूंज सुनाई दे रही है। तजमुल बाबा सामने रहेंगे आकिब मीर के। इस बार बैट एंड पैड साथ मिलाते हुए सिर्फ वापस खेलने में सफल रहे। आकिब मीर ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने की कोई भी संभावना नहीं। अगली गेंद, विकेट आ गया। आकिब मीर द अनडिस्प्यूटेड किंग विकेट ले गए, बैकफुट पे चले गए, मिडल स्टंप बाहर। पहला विकेट आउट होता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का। तजमुल बाबा बैकफुट पे मत खेल लीजिएगा, ये बहुत जोखिम भरा शॉट। वापस जाते हुए पहला विकेट आउट होता हुआ, और विकेट दिलाया आकिब मीर ने। The ball skidded through, stumps were dislodged. Tajamul Baba dejected. He was looking in his element now, hitting that monstrous 6 over mid wicket of Asif Rasool the previous over. Akib Mir picks up an important wicket, gives the breakthrough. Sultan Warriors Baramulla lose their first, and out comes the wicketkeeper batsman Wasim Kachru. These two are explosive as any one of the pairs out there throughout the valley. Akib Mir, the canny bowler, the miserly Akib Mir, picks up a wicket. Earlier on, facing spin, they have to face spin throughout the innings. There will be hardly any seam. There will be hardly any fast bowlers used in this innings. Long on. Mid-off comes inside the ring. Good delivery, wicket to wicket. He's bowling the final over of the power play. Asim Bashir at the other end is eager to come back onto the strike. 21 of 10. Strike rate of over 200. Next delivery gets on top of it. First runs in this innings for Wasim Kachru. Strokes it down the ground for 1. First runs of this over from Akib Mir. Now this will be interesting. He will be up against the best, Asim Bashir, who has been incredible so far. Long on has been asked to come inside the ring. Deep mid-wicket and deep backward square leg have been asked to go at the boundary. Will Asim Bashir go inside out over extra? Shout, 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 shout. Close given. The finger goes up and Akib Mir strikes wicket number 2. He pins him in front of the wickets and Asim Bashir has to walk back. That is a big blow for Sultan Warriors Baramulla. And Akib Mir has shown why he is the Mr. Reliable, why he is the Mr. Consistent. The captain relies on him. He did not disappoint. He picks Tajamul Baba with the second ball. He picks the dangerous looking Asim Bashir with the 5th ball. Sultan Warriors Baramulla have lost both their openers. They are under some strife now. Asim Bashir was threatening to take this game away, but he has to walk back now. Akib Mir, the man for Bijbehara Sports Club. What an over. With one more ball to come. The man who's walking into the middle.
अंदर आए हैं बल्लेबाजी के लिए टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी बल्लेबाजी के लिए पहुंचते हुए। खैबर सीमेंट बीपीएल 2024 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला। बहुत बड़ा विकेट आसिम बशीर को आउट किया। ये लगभग मैच को बहुत हद तक पलट लिया। यहां आसिम बशीर एक ऐसे खिलाड़ी जिनके पास फॉर्म, जिनके पास वो काबिलियत थी, लेकिन सामने थे आकिब मीर। नए बल्लेबाज अंदर आते हुए बल्लेबाजी के लिए टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी। सामने रहेंगे आकिब मीर के और देख लीजिएगा 2 विकेट और सिर्फ 2 रन इस ओवर से आते हुए। कमाल का ये ओवर आकिब मीर का, मैच में वापसी करवाई यहां बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब को। ओवर समाप्त होता हुआ 6 के बाद 46 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर ने मानो एक तरीके से सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को बहुत बड़ा झटका दिया है और बहुत हद तक वापसी करवाई है इस मुकाबले में। एक विस्फोटक शुरुआत नजर आ रही थी। सुल्तान के दोनों बैटर्स जिस अंदाज में जा रहे थे, जिस लहजे में जा रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे थे, और मेरा मानना कि अगर और 2-4 ओवर टिकते तो ये रन्स बहुत जल्दी बनने थे, क्योंकि बहुत तेजी से रन्स बनते हुए नजर आ रहे थे। हाँ, बहुत बढ़िया ओवर, बहुत बढ़िया ओवर। एप्रिसिएशन यहां मिलता हुआ नजर आ रहा है क्राउड की ओर से आकिब मीर को। कमाल का ओवर, 2 विकेट निकाले इस ओवर में। पहले तजमुल बाबा और उसके बाद आसिम बशीर का बड़ा विकेट। गेंदबाजी के मोर्चे पे अब नजर आते हुए ठीक मीडिया सेंटर एंड से परवेज रसूल गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए। ऐसे में टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी के ऊपर भी नजरें रहेंगी कि किस तरीके से वो इस इनिंग्स को आगे पेश करते हैं। 2 नए बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी और वसीम काचरू। पिछले मुकाबले में एक अच्छी पारी खेली थी कप्तान इम्तियाज लेफ्टी ने, लेकिन आज दबाव, आज बहुत बड़ा मुकाबला, प्रेशर कुकर सिचुएशन। यहां आसान रहेगा ये रन चेज नहीं। मिडिल ओवर्स में अब रन चाहिए। विकेट्स आपने गवाई है। पहले 6 ओवर्स जो कंपैक्ट नजर आ रहे थे जिसमें विकेट्स नहीं गिराई थी आपने, लेकिन अब 2 विकेट्स आपके आउट हो गए हैं पहले 6 ओवर्स के अंदर। जो मैं बात कर रहा था कि पहले 6 ओवर्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले इस रन चेज के अंदर। पहले हफ्ते में सेमीफाइनल है खैबर सीमेंट बीपीएल 2024 का। नीलेंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम 190 का टारगेट है सामने सुल्तान के। अब स्ट्राइक पे पहली बार रहेंगे वसीम काचरू की अगर हम बात करें, एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे विकेट कीपर बैटर है वसीम काचरू। शतक भी इस टूर्नामेंट में लगा चुके हैं, लेकिन आज अगर आप रन्स बना के गए ना तो फिर इस रन्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आज तो किसी एक ने यहां से एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी सुल्तान के लिए। परवेज रसूल गेंदबाजी के मोर्चे पे कवर रीजन पे शबी लेफ्टी नजर आते हुए। शॉर्ट थर्डमैन पे आसिफ रसूल बहुत सटीक रहते हैं। ये विकेट गेंदबाजी रहेगी, यहां आसानी से रन्स बनने नहीं देंगे परवेज रसूल। लेकिन यहां एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है। जुबैर मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जुबैर, स्वागत है आपका इस रन चेज के अंदर। अगली गेंद परवेज रसूल के, अब कहीं ना कहीं वो रिबिल्ड फेज चलेगा। जुबैर, विकेट्स गवाई है सुल्तान ने, कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप जमाने का प्रयास, आंखें जमाने का प्रयास दोनों बैटर्स की ओर से रहेगा। इस इनिंग्स को जितना लंबा खींचेंगे दोनों बैटर्स, मेरा मानना उतना ज्यादा बेटर रहेगा। विकेट एक आध और तो फिर और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। See, the first 5 overs from Sultan Warriors Baramulla, they were going all good, but then the man of crisis, Akib Mir, came and gave 2 important breakthroughs for Bijbehara Sports Club, and they are in the driving seat right now. When we talk about Bijbehara Sports Club and Sultan Warriors Baramulla, somehow they want to recover that the 2 wickets that they have lost. They are trying to build a partnership here. Imtiaz lefty, alongside him Wasim Kathru, because the required run rate is still 10.50 and you need a partnership here. The current run rate is 7.50. A partnership of 30 to 40 runs from here and they will be all good in this run chase. कोई दौराई इसमें नहीं है। देखिए, आपको पार्टनरशिप की आवश्यकता है। मिडिल ओवर्स में कहानी डिफरेंट रहती है, फील फैल जाती हैं। यहां से आपको चाहिए वो बैटर जिसमें काबिलियत रनिंग बिटवीन द विकेट्स की, क्योंकि मैदान के डायमेंशंस की हम बात कर रहे हैं।
आपके पास वो बैटर मिडिल में होना जरूरी, जो गैप्स को पिक करे, इस समय इस प्रेशर को झेले। बहुत बड़ा दबाव होगा। कप्तान इम्तियाज लेफ्टी, जिनका मानना था कि वो एक वाहिद टीम में खिलाड़ी थे जो चेज करना उन्होंने प्रेफर किया, जो शुरुआत में उनसे टॉस में बात हुई थी, उनका मानना था कि मैं एक वाहिद खिलाड़ी टीम के अंदर जो चेज के लिए जाना चाहते थे। 7 के बाद 51 रन बोर्ड पे, 2 विकेट के नुकसान पे। देखिए करंट रन रेट ठीक ठाक नजर आता हुआ, आस्किंग रेट का इश्यू रहेगा। अगर आप डॉट ओवर्स खेलते हैं वो आस्किंग रेट बढ़ जाएगा। एक तो आपको रन चाहिए, दूसरा आपने विकेट्स हाथ में रखनी है। अब इस रन चेज में विकेट्स इन हैंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो ये है कि इस टूर्नामेंट के अंदर नॉकआउट स्टेज में चेज हुआ नहीं है, ये भी एक इक्वेशन नजर में आएगा। Definitely, they should keep this in consideration that the dot ball percentage should be reduced here, because dot balls create pressure, create tension, and Sultan Warriors Baramulla will definitely try to overcome this situation that they are in right now. Akimir, the man of crisis for Bijbehara Sports Club, is back into the attack from the far end this time. He has taken 2 important wickets, provided 2 important breakthroughs in his very first over, and is bowling accurately lined, and his lengths are totally accurate. A sloppy field display from Parvez Rasool. 2 runs there conceding. Akimir has been totally good today. Bijbehara Sports Club, they were under tension, they were under pressure, and then Akimir came, provided 2 important wickets for his team. Another good delivery, this one. This dot ball percentage, this will create impact on the batting team, Sultan Warriors Baramulla. This will create the pressure on batsmen as well. Imtiaz lefty so far scored 5 runs on 6 deliveries. Wasim is batting on 4 runs. Hits it, the ball is up in the air, the fielder is under it, and he has to take a long walk back. Akimir striking with the ball again. An absolute dolly taken there by the fielder in the deep, and Imtiaz lefty, the captain of Sultan Warriors Baramulla, has to take a long walk back to the dugout. एक और विकेट आउट होता हुआ, एक और विकेट यहां आकिमीर के नाम 3 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। एक तरीके से इस बैटिंग क्रम की कमर तोड़ी है आज आकिमीर ने। 53 तीसरा विकेट यहां आउट होता हुआ। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की ये गेंदबाजी। देख लीजिएगा दूसरा ओवर करे, सिर्फ 4 रन कंसीड किए हैं, 3 विकेट्स। तजमुल बाबा, आसिम बशीर और अभी अभी टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी शिकार बने हैं। अंदर अब नए बल्लेबाज मुश्ताक अहमद का आक्रमण होता हुआ नजर आ रहा है। मुश्ताक अंदर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और मुश्ताक की अगर हम बात करें, पिछले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेली थी मुश्ताक ने। क्या मुश्ताक आए हैं शुभन गढ़वाल, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल सुल्तान तो फंस गई है इस रन चेज में, कोई दोहराई इसमें नहीं। 53 पे 3 विकेट आउट हो गए। 8वां ओवर पारी का आस्किंग रेट 11 के करीब नजर आता हुआ। ये टीम के कप्तान आज ज्यादा चल नहीं पाए। आज उम्मीद टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी से रन्स की थी, लेकिन रन्स आए नहीं। नए बल्लेबाज all over this batting line at the moment. आकिमीर 3 बड़े विकेट्स, दूसरा ओवर 4 रन सिर्फ कंसीड किए हैं। कमाल की ये परफॉर्मेंस नजर आते हुए। नए बैटर देखना पड़ेगा, शुभन गढ़वाल ही शायद अंदर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। जी हां, शुभमन गढ़वाल। देख लीजिएगा 238 मुकाबलों का एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी के पास, 6000 से ज्यादा रन्स नजर आते हुए। लेकिन यहां परिस्थितियां बहुत मुश्किल नजर आते हुए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। 53 3 विकेट के नुकसान पे एक छोर से विकेट्स दी नहीं थी, लेकिन एक छोर से विकेट्स लेके गए यहां के मीर। 3 बड़े विकेट्स, शुभन गढ़वाल और वसीम काचरू। स्कूप करने का प्रयास, खाली इलाके में खेला है, विकेट कीपर के लिए चेज। फाइन गई है गेंद, क्या रोक पाएंगे? बाउंड्री के आसपास रोकने में सफल रहेंगे, और बल्लेबाज के पास समय रहेगा 2 रन्स का। सत्तावन 3 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर पारी का, और यहां से एक पार्टनरशिप चाहिए, एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को कम बैक करने के लिए।
क्या स्पेल गटता हुआ आकिब मीर का 3 विकेट अब तक। शुभन गढ़वाल और वसीम काचरू चाहेंगे कि 50-60 रन की एक पार्टनरशिप यहां से लग जाए तो शायद वापसी कर सकते हैं। एक आध और विकेट तो फिर और मुश्किलें बढ़ जाएंगे। लॉन्ग ऑन रीजन पे फील्डर मौजूद, थोड़ा सा फंबल होता हुआ शबीर लेफ्टी से और दूसरे की मांग और आसानी से दूसरा रन मिल जाएगा। ओवर समाप्त होता हुआ 8 के बाद 59, 3 विकेट के नुकसान पे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। Run rate of 7.38 have taken Sultan Warriors Baramulla to 59 for 3 after 8. Asking run rate is touching 11 runs and over, 10.92. And Akib Mir's brilliance with the ball in hands has been acknowledged by the home crowd. 3 for 8 in his 2 overs so far has been brilliant. Parvez Rasool, none for 5 of his first, is back with the second over. Wasim Kachru, 7 of 6. First ball rocks back onto the back foot, cuts it, finds the fielder. 190 is a gettable score as long as you apply yourselves. Play an innings of substance. Across the line, heave towards the leg side, fielder deep on the boundary. Falls short of the fielder. Parvez Rasool is liking him, is inviting him to go for the big ones. Across the line was trying to pick up a boundary in front of square on the onside. Left hand, right hand combination. Shubham Garwal, 3 of 2. And this was the story of the first innings. They kept that right-left combination on right from ball 1. Sultan Warriors, they need a partnership. Outside edge between the keeper and the first slip fielder. And that ball will speed away to the boundary for 4. Finding the thinnest of the edges. There was a slip, but that was wide to the liking of Parvez Rasool. Wahid Teli behind the stumps. Didn't give a try either, and the ball sneaks through both of them down to the boundary. A lucky boundary to Shubham Garwal. Gets ready to face once more. It's time. Forward and defense. Well bowled and equally well played. Slip in play. Backward point. Fielder at catching cover inside the ring. Long off, long on, back on the boundary, deep mid-wicket and deep square leg. He goes for the big one, inside out. Fielder does well. The batsmen come back for a couple. Fielding will play an important role in this match. It will decide as which team will go into the finals. Sultan Warriors Baramulla fielded badly in the first half. In the last half, fielded brilliantly to stage a comeback. Next ball, turns it. Past Parvez Rasool will pick up one more run. Shubham Garwal closes this over with a single, 67 for 3, 9 overs done. Shubham Garwal and Wasim Kachru are trying to rebuild the innings. They are trying to stitch in a partnership. Sultan Warriors Baramulla, they need 11.18 runs and over. Akib Mir has been sensational with his spell so far. 1, 2, 3 runs needed from 66 balls. And Akib Mir is into the attack. The two umpires, Advocate Hilal and Muhammad Rafiq, both hailing from Baramulla. The
have been given the responsibility of officiating in this all-important semi-final number 1 of Bijbehara Premier League Edition 4. Aqib Mir around the stumps for the left-hander. Goes for the big one in front of mid-wicket and picks up 4. Slightly short, marginally short. Rocks back onto the back foot, toe ends it, but still finds the boundary. Chooses the longer boundary towards the onside. Picks up 4 of the first. Aqib Mir picking up both the openers, then picking up another wicket. Is hunting for more. Slowing the ball through. Nudges it away onto the offside. The left-hander, this is smart batting after a boundary. Let's Wasim Kachru back with the strike. Can Wasim Kachru play an innings of his life today? He has to play because Sultan Warriors Baramulla need him out there in the middle. He is a terrific batsman. He's got the capability, he's got the skill. Has he got the temperament to handle this attack? He cuts, finds the fielder. It's a dot ball. Aqib Mir, every now and then, he'll come and bowl his overs quickly. Not a massive spinner of the ball, bowls wicket to wicket, picks up wickets. Genuine wicket taker, sweeps, gets it fine. There is man back on the boundary. They will come back for 2. Takes his arm on. Brilliant running between the wickets. Yields 2 more for Sultan Warriors Baramulla. They are marching slowly but steadily in the 10th over. Required run rate touching 11.5. Final time, Aqib Mir. This time, rocks back onto the back foot. That's a much better shot. He will pick up a boundary on the 5th delivery of over number 10. That boundary was needed desperately. Wasim Kachru decided to step across, to step aside, and hits it over the top, inside out, and fetches another boundary. This time squirts it off the stumps down towards the offside. Sweeper does a good job coming from the boundary, restricts the batsman to 1. Halfway stage. Sultan Warriors Baramulla are 79 for 3. शुक्रिया आपका। इस समय की स्थिति थी कुछ अलग। बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब टेकिंग ऑन सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। 10 ओवर के खात्मे के बाद स्कोर 79, 3 विकेटों के नुकसान पर। और अभी जो आस्किंग रेट है, ज़रूरी रन रेट 11.10 प्रति ओवर यहाँ से बनाने होंगे इस बड़े मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। और इस समय जो पहले शुरुआती ओवर रहे थे उसमें काफ़ी धुएंधार बल्लेबाजी हुई थी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की ओर से, और उसके बाद रनों पे अंकुश लगा। आकिब मीर आए, उन्होंने विकेटें दिलाई जो काफ़ी बहुमूल्य विकेट थे, वो उन्होंने अपने नाम अर्जित किए। और उसके बाद 10 ओवर का कोटा ख़त्म, 79, 3 विकेटों के नुकसान पर। और अभी भी मुकाबले में जान है क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा गहराई है बल्लेबाजी में, और चाहेंगे कि इस गेम को आगे बढ़ाएं। और यहाँ से कोशिश रहेगी कि विकेट्स मिलें, क्योंकि 1-2 विकेट यहाँ से मिलने के बाद फ़ौरन यहाँ पे बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब की वापसी होगी। और फ़िलहाल की कहानी वसीम काचरू और शुभम गरेवाल। शुभम गरेवाल 8 गेंदों का सामना किया, 15 रन उनके नाम, और वसीम काचरू 12 गेंदें खेलने के बाद 15 पे नाबाद। और आकिब मीर की लाजवाब गेंदबाजी, 82 रन खर्च करे और 3 विकेटें अपने नाम अब तक।
तो ड्रिंक्स ब्रेक लगने के बाद हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं 10 ओवर के खात्मे के बाद 79 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी मुकाबला मान के चलिए 50-50 का मुकाबला है दोनों टीमों के बीच, क्योंकि बल्लेबाजी में अभी गहराई है और गेंदबाजी में चतुराई यहाँ से दिखानी होगी बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब को अगर ये मुकाबला अपने नाम करना है। अगर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बात करें, नदीम डार का आना अभी बाकी है और बिग मैन शो मंजूर पांडो का आना भी अभी बाकी है। तो निश्चित तौर पे यहाँ से मंशा तो साफ होगी कि जो आस्किंग रेट है 11 प्रति ओवर 11.10 प्रति ओवर यहाँ से बनाने होंगे, उसको थोड़ा सा नीचे लिया जाए, किसी एक बॉलर को थोड़ा सा अटैकिंग खेलने की कोशिश करिए। ये बढ़िया शॉट यहाँ पे, लेकिन मिसफील्ड होती हुई और इस तरीके से वहाँ पे शायद चौका मिलेगा। जी हाँ, गेंद घास के कालीन को चीरती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। आकिब मीर की ये गेंद बिल्कुल पड़ने के बाद हल्का सा घुमाव नजर आया, लेकिन वहां पे क्या शॉट वसीम काचरू का, बिल्कुल हट के खेले, स्टंप्स को एक्सपोज किया और जगह बना ली स्ट्रोक लेने की। एक बार फिर आकिब मीर, ये बढ़िया गेंद, लगातार ये खासियत रहती है अगर हम स्पिनर्स की बात करें, लेग स्पिनर की बात करें। तो क्षमा कीजिएगा, आई पार्डन, पारस शर्मा एक अच्छे लेग स्पिनर हैं। अगर हम बात करेंगे बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब के खेमे की, अब तक इस प्रतियोगिता में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है, लेकिन आज यहाँ जिम्मेदारियाँ कुछ अलग, नियम कुछ अलग। यहाँ पे अपील हुई है लेकिन अंपायर वहाँ पे इंटरेस्टिंग नहीं, पढ़ने के बाद वो घुमाव है विकेट में। हम घुमाव की बात कर रहे थे क्योंकि पहली इनिंग्स में भी देखा जाए तो स्पिनर्स का दबदबा रहा है और दूसरी इनिंग्स में आकिब मीर के वो ओवर और अब पारस शर्मा अपना काम अंजाम देते हुए। फिलहाल सुल्तान वॉरियर्स बारामूला 84 3 विकेटों के नुकसान पर चाहेंगे कि थोड़ी सी साझेदारीपन पे, और साझेदारी की आवश्यकता है इस समय अगर बात करें तो। थोड़ा सा यहाँ पे कठिनाई साइड स्क्रीन से, और अगर आज के ऑफिशियल्स की बात करें, एडवोकेट हिलाल और मोहम्मद रफ़ी दोनों बारामूला से बिलोंग करते हैं। स्पेशली आज इस बड़े मुकाबले के लिए ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं, और पारस शर्मा कमेंट्री बॉक्स एंड से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस बार बिल्कुल आगे की थी गेंद, जानते हैं कि वहाँ पे अवसर बनेगा कैच का, क्योंकि आप जितना विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, जितना आप गेंद को विकेट्स में, आपकी गेंद जितना पिच होके विकेट्स में फिनिश होगी बतौर स्पिनर, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। Paras Sharma, none for 7 of his first over so far. Strokes it on the offside. Good off drive. Fetches him one more. Fielders everywhere now on the boundary. Protection. Offside. Protection. Onside. Only 4 fielders are gonna remain inside the ring, inside the 30-meter ring. The rest of the fielders are allowed to go on the boundary. Paras Sharma, not a massive spinner, bowls wicket to wicket. Varies the pace outside the off stump, lifts it in the air and away from the fielder. Wasim Kachru finishes the over strongly with a boundary. Started the over with a boundary, finishes it with a boundary. 11 overs done. Sultan Warriors Baramulla 91 for 3. And Wasim Kachru is looking to up the antes. 24 of 15. Shubham Garwal 18 of 11. Required run rate has come down to 11. Current run rate at the moment is 8.27. These two left hand, right hand combination. Conference going on. Parvez Rasool is having a word with Aqib Mir. The trump card is picked up 3 wickets. And we are having on board the guests from one of the leading companies of cement manufacturers in the valley, Khyber Cements Private Limited, who are the title sponsors of BPL Edition 4. Khyber Cements, one of the brand names in
manufacturing cement and related products throughout the valley. They are present here amid this buzz, the electric atmosphere, crowd in numbers. Here is Asif Rasool to get the left-hander, probably skirts it in the gap, will pick up a single to bring Wasim Kachru back on strike. This will be interesting because Asif Rasool has got fielders everywhere. He's got a long on the boundary. He's got a deep square leg on the boundary. And on the offside, wide-ish long off. And then a fielder sweeping on the cover boundary. Asif Rasool. He is the canny type of bowler. He never gives you the room. He went for runs in the power play. He hasn't picked up a wicket so far. Drop kicks it in front of the fielder coming from mid-on. The bowler himself restricts the scoring to just one. Asif Rasool, none for 25. Khyber Cements presenting this year's BPL, the main title sponsors. Asif Rasool, he goes hard. This has gone up in the air and this has gone into the crowd for 6. That's a remarkable hit from the left-hander Shubham Garwal. Gets a full delivery outside the off stump. Deliberately bowled wider, deliberately bowled fuller because he had a fielder at wide-ish long off. Shubham Garwal says, thank you very much. I'm going to have some of that, and deposits it over wide-ish long off into the crowd for 6. That's a brilliant strike from the left-hander. Asif Rasool is having some problems with the ball. Has a word with umpire Advocate Halal. Is going to bowl the final delivery. This time he cuts. Oh, the fielder makes a mess of that. But then regains the possession of the ball. Beg your pardon, this was the 4th delivery of the over. 100 comes up for Sultan Warriors Baramulla in the 12th. Required run rate below 11. 10.80 to be precise. Run rate at the moment is 8.57. Short fine leg in place now. Long on, long off, deep mid wicket. Asif Rasool. Much better delivery on the stumps, and the respect was given by Wasim Kachru. Wasim Kachru is the key. He's not out on 25 of 17. Shubham Garwal 26 of 14. Final delivery of the 12th. Skips down the wicket. Clips it wide of the fielder. But does an exceeding job. Limits the scoring to just 1 to finish over number 12. It's 101 for the loss of 3. The remaining 8 overs, they need in excess of 11 runs and over. They require 89 from 48. Whose game is this going to be? कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से। स्वागत एक बार फिर 12 के बाद 101 3 विकेट के नुकसान पे शुभम गढ़वाल और वसीम काचरू ने वापसी करवाते हुए नजर आ रहे हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को। गढ़वाल राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा भी रह चुके हैं शुभम गढ़वाल की अगर हम बात करें, और ऐसे में 48 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। यहां से 98 रन की आवश्यकता। परवेज रसूल के हाथ में गेंदबाजी करेंगे मीडिया सेंटर एंड से, और उनके सामने बल्लेबाज वसीम काचरू स्ट्राइक पे रहेंगे। परवेज रसूल पहली गेंद के साथ राइट हैंड गेंद, कदमों का अच्छा इस्तेमाल इस बार।
डाउन द ट्रैक आए थे, उतनी खास टाइमिंग नहीं इस शॉट में, एक रन यहां मिल जाएगा। गढ़वाल के पास काबिलियत है, गढ़वाल एक ऐसे खिलाड़ी जो मैच का पासा पलट सकते हैं। विकेट चाहिए बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब को इस समय। 102-3 विकेट के नुकसान पे 47 गेंदें अभी भी आनी बाकी। खचाखच स्टेडियम, नीलेंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम बना हुआ। परवेज रसूल अगली गेंद के साथ वापस इस बार खेला। गढ़वाल की अगर हम बात करें, हिस्सा रह चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के कैंप का। T20 फॉर्मेट में 5 मुकाबले खेल चुके हैं छोटे रनअप के साथ। अगली गेंद पड़ने के बाद वो धीमी गति से गेंद आई, हल्के हाथों से वहां गढ़वाल ने खेला और रन दौड़ पड़े। और इस रन के साथ ही ये 50 रन की पार्टनरशिप पूरी होते हुए वसीम काचरू के बल्ले से 27 रन का दोनों बैटर्स का कंट्रीब्यूशन नजर आता हुआ। लेकिन अब साथ साथ यहां रिस्क भी लेना पड़ेगा, बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे। वसीम काचरू इस बार बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह जरूर बनाए। शॉट थर्ड में रीजन पे गेंद पहुंचते हुए रन एक ही मिल जाएगा। 4 गेंदें 3 रन इस ओवर से। एक बड़ा ओवर चाहिए। आस्किंग रेट देख लीजिएगा, वो 12 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 13.73 के औसत से आस्किंग रेट, जो उतना बड़ा तो T20 क्रिकेट के दृष्टिकोण से है नहीं। विकेट्स हाथ में अभी भी यानी बाकी। लगी है पैड पे, लगी है पैड पे, अपील अपील और आउट। विकेट मिल गया है, परवेज रसूल ने दिलाया विकेट। शुभमन गिडवाल बाहर जाते हुए एक और बड़ा विकेट। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का आउट। क्रॉस द लाइन इस बार गए थे, एक बार फिर देखना चाहेंगे। आगे का पैर सी पे गेंद लगते हुए अंपायर के मन में कोई दुविधा हुई नहीं और गढ़वाल वापस जाते हुए बहुत बड़ा विकेट, ये देख लीजिएगा। बहुत बड़ा विकेट, शुभमन गढ़वाल वापस जाते हुए। एक और झटका, 104 पे 4। मंजूर डार, मुश्ताक अहमद, सलीम मीर बैटिंग यूनिट में वो गहराई है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के पास। यह मुकाबला भी समाप्त नहीं हुआ है, इस मुकाबले में अभी कुछ भी घट सकता है। लेकिन शुभमन गढ़वाल की अगर हम बात करें, गढ़वाल 104 चौथा विकेट आउट होता हुआ। अंदर आए नए बल्लेबाज नदीम ठार का आक्रमण होता हुआ। नदीम ठार, मुश्ताक, मंजूर डार, बैटिंग तो ठीक ठाक अभी भी है सुल्तान के पास, लेकिन किसी एक बैटर को तो चांसेस अब लेने पड़ेंगे, बड़े चांसेस लेने पड़ेंगे। अभी भी देख लीजिएगा यहां से दिल से खैबर सीमेंट दिल से बना। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान। नदीम ठार बल्लेबाजी के लिए आए हैं। आज दिन अच्छा नहीं रहा था गेंद के साथ। नदीम ठार का विकेट ले नहीं पाए, 35 रन अपने स्पेल में कंसीड किए। परवेज रसूल के सामने विकेट मिल गया। यहां आखिरी गेंद का आना बाकी। 104 विकेट के नुकसान पे परवेज रसूल छोटे रनअप के साथ टर्न किया, सीधा खिलाड़ी के पास, सफल ओवर समाप्त होता हुआ। विकेट आया और मात्र 3 रन इस ओवर से। ओवर समाप्त 13 के बाद 104 विकेट के नुकसान पे 42 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी यहां से। और जीत के लिए 86 रन बनाने हैं। 12.29 की आस्किंग रेट, जो कि आसान रहने वाला नहीं है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए, लेकिन आसान तो कुछ भी नहीं है। ये रनचेज शुरुआत से ही आसान नहीं था, इसे आसान बनाना पड़ेगा। एक बैटर को तो अब चांसेस लेने पड़ेंगे। वसीम काचरू 20 गेंदें खेली हैं, 28 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, वेल सेटल्ड नजर आते हुए। लेकिन अब इस स्टार्ट को एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, जो बड़ा स्कोर आज कन्वर्ट नहीं कर पाए कोई भी बैटर सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की ओर से। तेज गेंदबाजी तो आपको नजर ही नहीं आएगी इस बॉलिंग यूनिट में। परवेज रसूल, आसिफ रसूल, आकिब मीर, क्या आकिब मीर के पास जाना चाहेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। यहां उनका ओवर
आखिरी समय तक रखना चाहेंगे, आखिरी ओवर्स में उन्हें इस्तेमाल करना चाहेंगे। फिलहाल तो यासिर से बातचीत तो होती हुई नजर आ रही है। दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज वसीम काचरू, अब नहीं तो कब, कभी नहीं, ये मौका है, यहां काउंटर अटैक कीजिए। यावर के विरुद्ध काउंटर अटैक करने का प्रयास रहेगा। इकबाल अब्दुल्ला गेंदबाजी के मोर्चे पे नजर आते हुए, इकबाल अब्दुल्ला के हाथ में गेंद, बल्कि यासिर गेंदबाजी के लिए आए हैं। राइट आर्म लेग ब्रेक, यासिर की पहली गेंद, फ्लाइटेड गेंद, स्ट्रोक उतना खास है नहीं, सिर्फ लॉन्ग ऑन तक पहुंच जाएगी गेंद। इनवाइट किया था बड़े शॉट के लिए, बड़े शॉट के लिए इनवाइट किया था यहां पे वसीम काचरू को। सिंगल डाउन द ग्राउंड, 105, 4 विकेट के नुकसान पे। मेरा मानना कि इस ओवर को टारगेट करना पड़ेगा सुल्तान को। ये ओवर है जिसमें आप चांसेस ले सकते हैं। क्या वो चांसेस लेंगे नदीम डार और वसीम काचरू? मंजूर डार, सलीम मीर, मुश्ताक अभी आने बाकी। गहराई तो बैटिंग यूनिट में है, लेकिन यहां रन चाहिए। यावर अगली गेंद के साथ, ये बहुत खराब गेंद है और यहां पूरे पूरे मौके थे आपके पास रन बटोरने की। बहुत दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का सिग्नल आता हुआ। इस ओवर को टारगेट कीजिए, यह प्रयास रहेगा। यहां से 2 रन आए हैं एक गेंद पे। फिलहाल साइड स्क्रीन के आसपास वो हलचल नजर आते हुए, उस वजह से बैटर जो है वो नाखुश नजर आते हुए। अभी भी देखा जाए यहां से सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को 84 रन की आवश्यकता, 35 गेंदों का खेल आना बाकी। यावर अगली गेंद, और इस बार बैकफुट पे आए, स्ट्रोक खेला वाइडिश लॉन्ग ऑफ से। खिलाड़ी जा रहे हैं आकिब मीर, पिक एंड थ्रो, ये खासियत रहती है। 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं आकिब मीर की। अगर हम बात करें गेंद के साथ आज 3 विकेट्स, बल्ले के साथ रन्स बनाते हैं, फील्ड में लाइटनिंग क्विक नजर आते हैं। और फील्ड में अब खिलाड़ियों का भी इम्तिहान होना है। डीप मिड विकेट इलाके पे एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ रीजन पे एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी। यावर चले अगली गेंद, फ्लाइटेड गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, वो घुमाव गेंद में नजर आता हुआ। पूरी तरह से नदीम डार बीट होते हुए। ये बड़ा मैदान है, यहां शुरुआत में ही आके बड़े शॉट्स खेलना बल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहने वाला है। अन्यथा अगर आप टाइम नहीं कर पाते हैं तो आधे बल्ले से शॉट्स कहीं नहीं जाएंगे। यहां फिर वाइड खेला है खिलाड़ी से, सिर्फ 1 रन के लिए, सिर्फ 1 रन। इस ओवर को देख लीजिएगा, 4 रन ही आए। बहुत बढ़िया ओवर डाल के गए हैं। हालांकि मेरा मानना कि इस ओवर में टारगेट करना चाहिए था, लेकिन 4 रन, पिछले ओवर में 3 रन, कुल मिला के 10 गेंदों पे आखिरी 7 रन ही आए हैं। और आस्किंग रेट जंप करते हुए नजर आ रही है, 13 के करीब। कदमों का अच्छा इस्तेमाल जरूर किया। डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन तक ही गेंद जाएगी और रन एक ही मिल जाएगा। स्ट्रोक्स जम नहीं रहे। सिंगल के साथ 110, 4 विकेट के नुकसान पे। 37 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। अगली गेंद, इस बार बैकफुट पे गए, स्ट्रोक जरूर खेला। डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑपरेशन पे आकिब मीर मौजूद। सिंगल के साथ ओवर समाप्त, मात्र 6 रन इस ओवर से आए 14 के बाद। 111, 4 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 36 गेंदों का खेल आना बाकी। मैं अपने साथी से जरूर जानना चाहूंगा, दोनों बैटर्स खासकर वसीम काचरू बहुत लंबे समय से क्रीज में मौजूद, 22 गेंदें खेली हैं, अब तो चांसेस लेने पड़ेंगे यहां से। Absolutely, 100%. They need to just create their own chances. They need to create their own lengths. They are not going to get anything loose from the bowlers. Spin bowlers, left arm spinners, right arm leg spinners, right arm off spinners. There is a huge variety in this bowling attack of Bijbehara Sports Club. They are on top at the moment, 111 for 4. 79 needed from 36. It's definitely gettable. 13.17. These two players from Sultan Warriors Baramulla, they have a reputation of doing it. They can do it. Iqbal Abdullah has been inducted into the bowling attack. Iqbal Abdullah, none for 19 of his first 2. He bowled a very good over in the power play, in which he went for just 3. And then in the second over, he was targeted
by Asim Bashir and Tajamul Baba. He was taken for 16. After a long break, he has been brought into the attack once more. On strike is Nadeem Dar. He needs to strike. Outside the off stump, taking it away from the hitting arc. Wide signaled. He has to re-bowl that. Third man is up inside the ring. So is short fine leg. Long off and long on. Deep mid-wicket, deep square leg. Short ball helped on its way. And that's sailing into the crowd. Maximum coming from ball number 1. The first legal delivery of this over. Iqbal Abdullah. He will definitely like to forget this day with the ball in hands. Dragged down. And Nadeem Dar was waiting for it. Smashes it. And picks up the maximum. Much needed for Sultan Warriors Baramulla. Iqbal Abdullah. This time offside in the air. Fielder. He will drop short and the ball will kick into the boundary. Misfielded Iqbal Abdullah. It has not been his day so far. There was a fielder, but he had absolutely no chance to stop that. In the gap, 6 and a boundary. None for 30 so far. Nadeem Dar. This time he goes down the ground. 2 is the call straight away. The fielder does well this time around. Limits the scoring to just 1. Iqbal Abdullah has been under some pump here. He's given away 31 runs. His bowling is third. Now Wasim Kachru is on strike. Skips down the wicket. Inside out. Brilliant from Wasim Kachru. Threads it into the gap. Takes it on the full. Iqbal Abdullah has been taken to cleaners today. None for 35 with 2 more balls to come in the third over. A day to forget as soon as possible. Wasim Kachru is striking them brilliantly. 34 of 23. This time he's trying to reverse. Shout for a caught behind. Wasn't away from that edge. He was trying to target that cover boundary. He was trying to go the other way. He was trying to reverse it. Iqbal Abdullah. A rare dot ball in his spell so far. Slows it down. And as a result gets it away from the batsman. Gets away with that. Final ball. Skips it down the track. Beautifully bowled in the end. Takes it away from the arc of the batsman. Dot to finish over number 15. Sultan Warriors Baramulla. A 1-2-7 for 4. Wasim Kachru and Nadeem Dar threatening to take this game away from BSC. They require 63 from 30 balls. Required run rate is 12.60. These 5 overs are going to be crucial for both BSC as well as Sultan Warriors Baramulla. कोई दौरा इसमें नहीं. आखिरी 30 गेंदों का खेल आना बाकी, लेकिन इकबाल अब्दुल्ला के विरुद्ध इस ओवर में चांसेस लिए दोनों बैटर्स ने. खासकर नदीम डार ने पहले 2 गेंदों पे 10 रन. उसके बाद वसीम काचरू के बल्ले से एक चौका आता हुआ. और अब तो चांसेस लेने पड़ेंगे. आखिरी 5 ओवर्स का खेल आना बाकी. जीत के लिए 62 रन. विकेट्स 6 हाथ में हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के पास. और ऐसे में अगर आप देखें यावर एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे नजर आते हुए, क्या इस ओवर को टारगेट एक बार फिर करना चाहेंगे? जो पिछला ओवर था उसको टारगेट किया था. क्या यावर के सामने राइट आर्म लेग ब्रेक, एक हाई आर्म एक्शन के साथ यावर पहली गेंद के साथ सामने रहेंगे. नदीम डार हवा में शॉट, उतनी खास टाइमिंग हुई नहीं है. वाइड अप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिल जाएगा. वहां पे आके मीर नजर आते हुए सिंगल के साथ 128 रन. 4 विकेट के नुकसान पे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला
ये मुकाबला जीतने के लिए 62 रन चाहिए। 29 गेंदें आपके पास। अब स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज वसीम काचरू और नदीम डार किसी हद तक तो वापसी करवाए हैं, पिछले 1-2 ओवर से चांसेस लेते हुए नजर आए हैं। काचरू कदमों का अच्छा इस्तेमाल, ऊपर गई है गेंद, सिर्फ ऊपर, नीचे खिलाड़ी लपक लिया इस कैच को। वसीम काचरू जाएंगे बाहर। एक और विकेट आउट होता हुआ, एक और ट्विस्ट इस मुकाबले में। काचरू निराश नजर आते हुए, शायद वहां भले की मांग की थी, वो बल्ला सही समय पे अंदर नहीं आया था। और पटाखे फूटते हुए दर्शक नजर आ रहे हैं मैदान के भीतर। ये बहुत बड़ा विकेट मिलता हुआ, बहुत बढ़िया कैच वहां पे। वो जो विकेट की आवश्यकता थी इस समय, बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब को यावर ने दिलाई विकेट। वेल सेटलेड वसीम काचरू बाहर। क्या मंजूर डार को आप अंदर भेजना चाहेंगे या फिर मुश्ताक को आप अंदर भेजना चाहेंगे? ये तो डगआउट से देखने वाली बात रहेगी। मेरा मानना मंजूर डार के लिए सही प्लेटफॉर्म है, आइए और बड़े शॉट्स खेलें। यहां से देखना पड़ेगा। वसीम काचरू अभी भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वापस जाना पड़ेगा। किस बल्लेबाज को अंदर भेजा है? मुश्ताक ही आए हैं, मुश्ताक ही अंदर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। मंजूर डार को बैक नहीं किया यहां कप्तान ने, बल्कि मुश्ताक अहमद पे नजरें यहां कप्तान की, और वो बल्लेबाजी के लिए आएंगे। एक 128, 5 विकेट के नुकसान पे मुश्ताक अहमद का आक्रमण होता हुआ। पिछले मुकाबले में कमाल की पारी खेली थी, 50 रन इनके बल्ले से लगे थे, लेकिन वो कुछ परिस्थितियां और थी। आज यहां आपके पास सिर्फ 28 गेंदों का खेल आना बाकी। यासीर को मिला विकेट। यासीर राइट आर्म लेग ब्रेक। हालांकि मेरा मानना कि जो दोनों बैटर्स थे उनका यही प्रयास था कि यासिर की बुर्द आप चांसेस लेना चाहेंगे, लेकिन उसमें फंस गए, उस जाल में यहां फंस गए। इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, अली चाना क्रिकेट क्लब बिजबेहारा दूसरा टाइटल, डड्डू रेंजर्स तीसरा टाइटल, और लगातार तीसरा फाइनल खेलेगी अगर आज ये मुकाबला जीतेगी बिजबेहारा। अगली गेंद, बैट एंड पैड साथ मिलाते हुए मुश्ताक के पास क्षमता है बड़े शॉट्स खेलने की। यहां बड़े शॉट्स चाहिए, यहां तो डॉट बॉल आप पे नहीं कर सकते, यहां तो आते ही आपने बड़े शॉट्स खेलने। 128, 5 विकेट के नुकसान पे, 129, 5 विकेट के नुकसान पे। यासीर अगली गेंद के साथ, क्या ऊपर गई है गेंद? ऊपर गई है गेंद, गैप में गेंद जाते हुए पीछे खिलाड़ी। अच्छा एफर्ट वहां पे, रन सेव करते हुए दूर रखा था नदीम डार के रेंज से यहां पे यासीर ने, लेकिन नदीम डार मेरा मानना इन पे ज्यादा निर्भर रहेगा ये रन चेज। 18 रन पे पहुंचते हुए 10 गेंदों पे, यहां एक मौका उनके पास। हवा में गई है गेंद, खिलाड़ी नीचे, लपक लिया इस कैच को। एक और विकेट यासीर के नाम। इकबाल अब्दुल्ला इस कैच को लपकते हुए। A big wicket under the That's a big wicket under the circumstances. The big wicket of Nadeem Dar. And Yasir strikes once again. And what a catch by Iqbal Abdullah. So far, the day did not belong to Iqbal Abdullah. But now, in the dying moments of the game, he has plucked out a ripper. That's an absolute screamer from Iqbal Abdullah. Nadeem Dar, the danger man, has gone back. Sultan Warriors, Baramulla lose wickets. Wicket number 2 in this over. 6 wickets down now with the ball to come in the 16th over. And out comes the big man, Manzoor Dar. Manzoor Dar playing a big knock.
Galizu Cricket Stadium, Kupwara, in the finals of one of the tournaments there, in the finals of RCL probably. Playing for Friends 11 Lola up there, but now he's got a different job. First ball, he smashes it. Protection in the deep. Fielders everywhere. Singles won't do it for Sultan Warriors. Single to finish. An outstanding over from Yasir. 16 overs completed. It's 1-3-2 for the loss of 6. Mushtaq and Manzoor Dar. Job cut out. They need 58 from 4. Can they do it? Who is the man for Sultan Warriors? Who is it going to be for Bijbehara Sports Club? They are on top at the moment. Asking run rate is touching 15s. Run rate at the moment is 8.25. Iqbal Abdullah has the ball in his hands. He has gone for plenty so far. None for 35. And there was some retribution via that catch. An absolute screamer. Iqbal Abdullah is the man for the big occasions. He has played in one of the premier tournaments all over the globe. Indian Premier League. He's played for India under 19s. He's an experienced campaigner. First ball to Manzoor Dar. No respite for Iqbal Abdullah. Disappears over long on for a maximum. Manzoor Dar has got the reputation of hitting the long balls. First ball, thank you very much, smashes it. Parvez Rasool is trying to calm him down. Iqbal Abdullah, it has been a day. It has been this kind of a day for him. A day to forget ASAP between the umpire and the stumps. This time clipped brilliantly. Should look to come back for 2. Sent back by Mushtaq. Fuller delivery on the stumps. Manzoor Dar. A big muscular lad. Mushtaq on the back of a brilliant 50 in the quarterfinals. Is facing Iqbal Abdullah. Turns it away onto the onside. Will be one more. So after that 6, 2 more runs in the form of singles. 3 balls yielding 8. Iqbal Abdullah would definitely want to finish this over on a high. None for 43. On strike is Manzoor Dar. Manzoor Dar gets an inside edge onto that shout. A chance for a run out there as well. For a moment I thought that Iqbal Abdullah might have snuck through, but it wasn't the case. The finest of those edges saving Manzoor Dar. First ball maximum. 3 singles of the next 3. 9 runs coming of the 4 balls. Sultan Warriors Baramulla, they need a boundary. They need a 6. This has gone up in the air. There is a fielder down under there. It falls in no man's land. The batsman will come back for 2 more. Good running between the stumps. That shot wasn't of the middle. There was no power behind it. There was no timing. 2 more runs. 11 so far. Can they hit a 6 and close this on a high? Iqbal Abdullah, hands on hips. A day to forget for sure. None for 45. Can he complete his 50? Crowd in numbers. Short ball. Helped on its way. Protection deep. On the boundary. Square leg cuts it off. Batsmen pick up a single to close over number 17. Iqbal Abdullah's day with the ball comes to an end. A forgettable day, a day to forget as soon as possible. None for 46. 17 done.
Sultan Warriors Baramulla. A 1-4-4 for 6. They require 15.33 runs and over from those 3 remaining overs. Sultan Warriors Baramulla need 46 with 4 wickets in the hut. 18 गेंदे 46 रन चाहिए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को यह मुकाबला जीतने के लिए। आस्किंग रेट लगभग 15.5 के औसत से रन चाहिए। इस ओवर को बड़ा देखना चाहेंगे। किस गेंदबाज के हाथ में गेंद दी गई है? यासिर को गेंद सौंपी गई है। जी हां, यासिर के हाथ में गेंद, सामने मुश्ताक रहेंगे। 18 गेंदे 46 रन। लॉन्ग ऑफ लिया है। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, डीप मिड विकेट इलाके पे खिलाड़ी, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी नजर आता हुआ। उसके अलावा डीप बैकफुट पॉइंट रीजन पे खिलाड़ी मुश्ताक अहमद के पास मौका एक बड़ा शॉट खेलने का। यासिर 2 विकेट अब तक ले चुके हैं। पहली गेंद 18 गेंदे 46। खराब गेंद, ऊपर गई है गेंद और दर्शक दीर्घाओं में गई है गेंद। 6 रन मिल जाएंगे यहां पे। छक्के के साथ ये शुरुआत। हाफ ट्रैकर वहां पे। ये लेग स्पिनर के लिए गेंदबाजी करना 18वां ओवर आसान नहीं है। ये मुश्ताक ने प्रेशर कुकर सिचुएशन में छक्का लगाया है। 40 रन 17 गेंदे। ये मुकाबला किसी भी तरफ घट सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है। यासिर अगली गेंद के साथ इस बार गई है ऊपर, एक बार फिर गई है ऊपर। गेंद निकल गई है, निकल गई है गेंद 4 रन के लिए। कमाल का शॉट, इनसाइड आउट यहां पे मुश्ताक अहमद द्वारा। 10 रन पहली 2 गेंदों पे, 154 6 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 16 गेंदों का खेल आना बाकी। 36 रन चाहिए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को, लेकिन फिलहाल मैन ऑफ द मोमेंट सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए मुश्ताक नजर आते हुए। मुश्ताक ने पिछले मुकाबले में भी कमाल किया था और यहां बड़े मंच पे, इस बड़े स्टेज पे एक बार फिर अगली गेंद यासिर के, फुल टॉस, ऊपर गई है गेंद। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद निकल गई है। एक और चौके के लिए गेंद। घमासान शोर। 14 रन आए हैं पहली 3 गेंदों पे। मुश्ताक का एक काउंटर अटैक। 158 पे 6। ये जो दाव खेला था कप्तान ने, ये दाव नहीं चला। ये 18वां जो ओवर जो आप यासिर से करवाए, इस ओवर में 14 रन आए हैं पहली 3 गेंदों पे। यही ओवर तो देखना चाह रही थी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। अब चाहिए 32 रन। 15 गेंदों का खेल आना बाकी। क्या बढ़िया बल्लेबाजी की है मुश्ताक। आज आउट ऑफ द सिलेबस आए। बहुत कमाल के शॉट्स मुश्ताक अहमद के बल्ले से। यासिर अगली गेंद, 14 रन पहली 3 गेंदों पे। ये डॉट गेंद निकल गई है। ये डॉट गेंद यहां पे निकलते हुए 4 गेंदे 14 रन। जीत के लिए 32 रन चाहिए। 14 गेंदों का खेल आना बाकी। किस तरफ जा रहा है मुकाबला? सामने रहेंगे मुश्ताक। अगली गेंद हवा में गई है गेंद, लेकिन गैप में गई है गेंद। नो मैंस लैंड में पहुंचते हुए अब जाके लॉन्ग ऑन रीजन पे खिलाड़ी आएंगे। सिंगल यहां मिल जाएगा। स्ट्राइक पे मंसूर डार पहुंच जाएंगे। 13 गेंदे 31 रन। फाइनल से पहले फाइनल्स यहां पे ये नज़ारे बहुत कम आपको नजर आएंगे। मैदान के अंदर खचाखच स्टेडियम भरा हुआ नजर आ रहा है। क्या मुकाबला घटता हुआ। मंसूर डार 4 गेंदों पे 8 रन। दर्शकों का शोर।
लंग ऑफ पे खिलाड़ी, दूसरे की मांग रहेगी लेकिन मंसूर डार नहीं, पलट के वापस आ जाएंगे। ओवर पूरा हो जाएगा 160 पे 6। आखिरी 12 गेंदे, 30 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को। हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं किस तरफ जा रहा है मुकाबला। फिलहाल तो मेरा मानना 60-40 है मुकाबला, आपके थॉट्स? Absolutely. This over from Yasir has brought it down to 40-60. It's 60 in tilting in favor of Bijbehara Sports Club because they have got Parvez Rasool's one over. I definitely want to have a look at the scorecard. Parvez Rasool has 1 over to bowl. I think Akib Mir has 1 over left under his sleeve. And Paras Sharma has an over. So plenty of options left with the captain. And he's brought on the trump card, Parvez Rasool, who bowls at the death, bowls brilliantly. Over number 19, the most crucial over of the innings. Parvez Rasool is going to bowl it. What an atmosphere, what a game of cricket it has been so far. Ebbs and flows. It's been a game tilting here and there. Every now and then, crowd in absolute numbers here. Bijbehara Sports Club. They need to dislodge this partnership. What a counter-attack this has been from Mushtaq. 20 of 9 has played some outstanding strokes. Manzoor Dar. Repetition of hitting the ball high, hitting the ball big. Can he deliver? Long on, long up, deep mid-wicket. Manzoor Dar on strike. Parvez Rasool to Manzoor Dar. First ball down the leg side. It will be a leg by. Are wide signalled. It hasn't come off the pads. First ball is a wide. Extras, 2 of them. Not a single legal delivery bowled. Experience up the sleeve, Parvez Rasool. Mushtaq has been terrific in this tournament so far. He's playing his second game. He has been impressive. Parvez Rasool to Mushtaq. Mushtaq digs it out nicely. Man in the deep. Cool as cucumber. Akib Mir does well. He's bowling his 4th. 19 for 1 so far. Sultan Warriors Baramulla. They need a big one. He waits for the ball. Slower. Man deep on the boundary. Fumbles. But the batsmen are content with just 1. 2 singles of the first 2 apart from those 2 wides. Sultan Warriors Baramulla. They need a big hit now. 26 needed. Well bowled Parvez Rasool. Hitting the block hole. The batsmen are coming back for 2. But this is some terrific death bowling from the off spinner. Parvez Rasool is asking the fielder to go a bit closer, not to go wider. 18.3. Sultan Warriors now need 24. Parvez Rasool to Mushtaq. And Mushtaq goes big, leg side. Man back, takes the catch. Parvez Rasool strikes. He's not looking happy with the fielder who was at the wideish long off position. He follows the batsman who tries to swing. Mushtaq has to depart. Sultan Warriors Baramulla lose their hero from the other game. He was threatening to take this game away from Bijbehara Sports Club. Parvez Rasool strikes and strikes gold in his 4th over. It's 166 for 7.
They need 24 from 8. Manzoor Bhai, 24 from 8. Manzoor Dar is still there. Batting still to come. Are we going to see another twist? Is there going to be another twist? Your thoughts? आसान रहने वाला नहीं है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। बड़ा जबरदस्त ओवर गया है। 4 रन ही इस ओवर से आए हैं 4 गेंदों पे, जबकि आपको आस्किंग रेट डिमांड करती है 15 रन। बड़ा शॉट आया नहीं है इस ओवर में। आखिरी ओवर में 20 से ज्यादा रन्स। अब देखिए आस्किंग रेट 18 के करीब नजर आते हुए 8 गेंदे और आती बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा। सलीम मीर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। मंजूर डार भले वहां मौजूद, लेकिन आसान कार्य है नहीं यहां। 8 गेंदे। सलीम मीर अंदर आए बल्लेबाजी के लिए। परवेज रसूल एक छोटे रनअप के साथ। सलीम मीर सामने, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। क्या गैप मिला है? पीछे खिलाड़ी लॉन्ग ऑन रीजन पे आके मीर सिंगल ही मिल जाएगा। 5 रन आए हैं इस ओवर में। पहली 5 गेंदों पे 167, 7 विकेट के नुकसान पे। क्या बढ़िया ओवर। प्राइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर परवेज रसूल डिलीवर करते हुए। पेनल्टिमेट ओवर में फुल टॉस, ऊपर गई है गेंद। अच्छा फील्ड, अच्छी फील्ड वहां पे। रन एक ही मिल जाएगा। कमाल का ये ओवर, कमाल का ये ओवर। 6 रन और विकेट इस ओवर से आया। 168, 7 विकेट के नुकसान पे 22 रन आखिरी ओवर से चाहिए। जी जुबैर। The most important over of this innings under the way, the 20th over, the most important over, that will be the game decider. 22 runs are required from the last over and it will be up to home. Home will Bijbehara Sports Club choose to ball. 22 runs required of the last over and it has came down to the last over, the semi-final of the first semi-final of Bijbehara Premier League. Last over, 22 runs required. It has been a nail-biting match, full of roller coasters, the journey till now, and it has came down to the last over. Parvez Rasool bowled so brilliantly, 2 for 24 in his 4 overs, but it has came down to the last over, and it will be a bowler from the far end, a pacer maybe, or a spinner. 22 runs are required. The current run rate is 8.84. Manzoor Dar and Salim Mir out in the center. They have to take their team home. They have to do something different. It's a pacer, it's a gamble. I believe it's a kind of gamble that Bijbehara Sports Club is playing right now. No pace at all in this match till now, but the last over, it has came down as a pacer for the last match, for this last innings. Danish Khande has to bowl this last over. He has the responsibility on his shoulders. 22 runs required in the last over and he has a job to do. Danish Khande, he has to put his sweat and blood into this last over so that Bijbehara Sports Club will go through the finals of Bijbehara Premier League Edition 4th. 22 runs required, the last over of the first semi-final of Bijbehara Premier League. Danish Khande will be bowling to Manzoor Dar and it will be definitely a tough competition. Let's see who will win this. It's a nail-biting game out in the center right now. This has been an up-down journey till now in this game and it has came down to the last over. The decider, there's some change in the field, some slight changes. Here we go, the final thriller over of the game. Danish Khande to Manzoor Dar. Who will win this contest? Sultan Warriors Baramulla versus Bijbehara Sports Club. The first semi-final, the last over, 22 runs required. Danish Khande to Manzoor Dar. Could not connect it very well, will look for the double. But he will have to settle only for the one. And this time, Salim Mir will be on strike. ये बहुत मुश्किल काम रह गया यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। 5 गेंदे 21 रन, हर एक गेंद पे बड़ा शॉट चाहिए। मंसूर डार को मिली थी यहाँ पे जिम्मेदारी, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ एक सिंगल पहली गेंद पे, जबकि बड़े शॉट्स की आवश्यकता इस समय सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। ये जो पिछला ओवर परवेज रसूल ने डाला था, मात्र 4 रन, पेन अल्टीमेट ओवर, कमाल का वो ओवर, यॉर्कर
ठिकाने पे गिरी थी, स्पॉट वो ओवर नजर आया था और उसने कहीं ना कहीं वापसी करवाई बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब को। और लेजेंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एक बार फिर इस बड़े मंच पे। मंसूर डार, सलीम मीर अब स्ट्राइक पे रहेंगे। आखिरी 5 गेंदों का खेल आना बाकी, 21 रन। और मुझे याद आ रहा है T20 2016 का पांच गेंदे 21 रन। कार्लोस ब्रैथवेट याद आता है, लेकिन यहां ये डॉट के निकल गई है। Two balls, just 1 run. Up till the 20th over, there was no seamer being incorporated into the attack. Here is Danish Khande. Third ball, it's a dot ball. 3 on the go. It will be a run out as well, I think. It has been sent upstairs. Manzoor Dar, the man in question. Sultan Warriors, Baramulla. The game is slipping from their grasp. They need 21 from 4. They need 4 sixes to seal the deal. Who is the man for them? Who is going to be the Carlos Brathwaite of Sultan Warriors, Baramulla? Now, 3 balls, 21. This is seemingly unlikely now. Unless there is a no ball or a wide ball. I think Manzoor Dar was short of his ground. Yes, he's short of the ground. He's given out. The third umpire's decision comes. He's given out. Run out. Manzoor Dar has to walk back. Wicket number 8 for Sultan Warriors. Baramulla is out. Bijbehara Sports Club inch closer to a victory to seal the deal in the finals of Khyber Cements presenting Bijbehara Premier League Edition 4. Crowd in numbers. Sultan Warriors fans, Bijbehara Sports Club fans, the crowd has been disciplined. Knowledgeable crowd supporting every moment, supporting every good performance by the players. This is the need of the hour. This is the name of the game. Parvez Rasool is having a word with Wahid Teli. He's having a word with Iqbal Abdullah. Smiles all around the camp of Bijbehara Sports Club. 1 more dot ball without a no ball or a wide. They will go through. Cricket, a sport of highest unpredictability. You can't predict anything till the last ball is bowled. Danish Khande so far has been brilliant. Parvez Rasool in the penultimate over was pinpoint accurate. The 4th ball, another brilliant delivery. It's a dot ball, and with this delivery the hopes of Sultan Warriors Baramulla vanish. They need 21 from 2. Danish Khande, what a man to have. What a player, what a bowler to have under such crunch moments. Slower ball will be just the one. Last rights in this game. Bijbehara Sports Club are the hot favourites to go into the finals. Finals for the 3rd time. Happy camp of Bijbehara Sports Club. Here is Danish Khande. Full toss. Is it a no ball? The umpires are having a closer look. The spectators are out into the middle of the ground. Was it a no ball? I think it has been signaled as a no ball for height. The umpires are clearing the spectators. It's a no ball. 1 more ball remaining, but that doesn't make a difference. It will not make a difference at all. Danish Khande has to bowl the final delivery. Has to re-bowl that.
Sultan Warriors 1-7-3 for 8. They need 17 more runs from just one ball. 17 from one ball is most unlikely to happen. It hasn't happened in the past. It's not gonna happen now. Bijbehara Sports Club fielders, bowlers, the management, everyone will be a happy, chirpy guy. The final delivery of the innings coming up. The final delivery of the match coming up. Danish Khande to bowl. On strike is Anchal Singh. Slight hold up in the play. The umpire, Mohammad Rafiq, is waiting for the new batsman to go in the middle, into the center. It's Kulwinder Singh. The batsman was run out. There is a run out on a no ball. Salim Mir, who was run out on a no ball, and Kulwinder Singh is the man who will be at the non-strikers end. On strike is Anchal Singh. The final delivery of the match, Danish Khande to Anchal Singh. Outside the off stump, the game, the deal is done and dusted. It has been sealed, and Bijbehara Sports Club march into the finals for the third consecutive time in BPL history. Khyber Cements presenting Bijbehara Premier League edition for Sultan Warriors Baramulla will pack their bags and go home. Bijbehara Sports Club, the first team to punch their tickets with a clinical performance in the semi-finals. They win the game by 17 runs. Sultan Warriors Baramulla are out of the tournament. What a game. A game of the season so far. It was Sultan Warriors Baramulla. They're taking on Bijbehara Sports Club in the first semi-final of Khyber Cements presenting Bijbehara Premier League. 189 for 8. Bijbehara Sports Club scoring in their innings, first innings, setting a target of 190, and in the end, Sultan Warriors Baramulla fall short by 17. Congratulations to Bijbehara Sports Club. Commiserations and hard luck to Sultan Warriors Baramulla. This has been an absolute thriller game, and in the end, Bijbehara Sports Club 1, 2, 3, and they are through the finals of Bijbehara Premier League, defeating Sultan Warriors Baramulla by the margin of 17 runs. And this has been an absolute thriller today. Congratulations to Bijbehara Sports Club for qualifying for the finals of Bijbehara Premier League. An absolute nail-biting game comes to an end. And this is how many people are supporting, how many people were present in the ground today. An absolute game of the century is this one. Thank you very much for joining us. We will be live with you in the post-match presentation. We'll be live with you in 2 minutes only.
वेलकम बैक। और नीलेंद्रसू स्पोर्ट्स स्टेडियम बिजबिहारा से खबर यही कि पहली टीम बन गई है बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब जो पहुंच गई है फाइनल्स के अंदर। और पहले तो उनको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब को, एक आउटस्टैंडिंग विक्ट्री, खासकर वो 19वां ओवर। जुबेर मेरा गला सूख गया है बट स्टिल आई वांट टू आस्क दैट 19th ओवर, पेनल्टिमेट ओवर जिसमें वापसी करवाई परवेज रसूल ने बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब को। मेरा मानना कि वही मैच टर्निंग ओवर था। See, the 19th over in T20 game is very crucial, and it was the man in the front, Parvez Rasul, who bowled an absolute delightful over, and that plays an important role in victory of Bijbehara Sports Club, and they have qualified for the finals of Bijbehara Premier League Edition 4th. It has been a roller coaster game today, but in the end, the team who holds his nerves wins the competition, and Bijbehara Sports Club, they were up to the mark, up to the moon. I think the main turning point was when Akib Mir came in the 6th over and he fracked 3 important wickets. That was a game-changing event. What do you think about that? No, undoubtedly, Akib Mir bowled brilliantly. I mean, that was a match-turning over, as you rightly said, because picked up the 3-man batters of Sultan Warriors, Baramulla. Asim Bashir, he was looking deadly dangerous the way he was middling almost everything. Tajamul Baba, he's a 6-hitting machine, and then he got another one, 3 wickets. The captain Imtiaz lefty. So, I mean, everyone's contribution was equally well. But the Parvez Rasul's 19th over, the momentum was there. I mean, they got the momentum. Sultan got the momentum. Mushtaq was there. Alongside him, it was Manzoor Dar. They were batting brilliantly. I mean, at one stage, they were looking that they may take him away from the Bijbehara Sports Club. But Parvez Rasul, brilliant. I mean, all the experience coming into the place, bowling that 19th over, Yarker coming into the place, not giving any kind of space to the batters to hit that big shots. I mean, that was a superb over, and many congratulations to Bijbehara Sports Club. But I would definitely like to ask you a few more questions regarding the Baramulla, Sultan Warriors Baramulla. I think they were in the game. Why do you think they lack in the run chase? See, when we talk about Sultan Warriors Baramulla, definitely they are a strong side on any given day on cards. They are better when they bat or when they bowl. When they came down to chase a score of 190, which is a par score on this ground, but not that difficult. You can chase down when you have the proper batting order. 190 was quite chaseable. In first 5 overs, they batted brilliantly. The way Asim Bashir and Tajamul Baba were belting the bowlers, that was a treat to watch. But then the man of crisis, Akib Mir, came and gave Bijbehara Sports Club a befitting 3 wickets haul. And then again, we talk about the 19th over, that was very crucial. Parvez Rasul came and Parvez Rasul shined with the ball. This was an absolute turning event of the game and definitely a game to watch out. Now, the question arises when we talk about Bijbehara Sports Club. Probably the next semi-final will be between United Imports Srinagar and Hillview Rajouri. What do you think about that contest too? Not most probably. It's tomorrow. The game is tomorrow. It's at 11 a.m. Hillview Rajouri taking on United Imports Srinagar. I think Hillview Rajouri has a very strong side. There's no doubt about that. But cricket, we can't predict anything. As I earlier said to you, that predictions fail in cricket. But definitely on cards, if you look, Hillview Rajouri is a far stronger side than United Imports Srinagar. But it will be a very it will be an interesting contest between both the teams. But hopefully that may the best team win, all we can say that. But the news from the center at the moment from the Nilendro Sports Stadium, it's Bijbehara Sports Club. They have become the first team to qualify into the finals. That's all down here.
करना है, बॉलिंग नहीं की आपने? आज नहीं बॉलिंग। वेल हमारे साथ बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब के एक खिलाड़ी पी पराग जुड़े हैं, जिनके बैट से आज रन्स आए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट स्टेज पे रन्स आए। अर्ली आपने विकेट गंवाए, लेकिन उसके बाद क्या बातचीत हुई अपने साथी आसिफ रसूल से और किस तरह आपने इनिंग्स को आगे एंकर किया? विकेट जो लास्ट मैच का विकेट था उससे थोड़ा सा ये स्टिकी था, ड्राई था विकेट। तो प्लान तो एक ही था कि क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे मेरे से, तो मेरा काम था कि उनको स्ट्राइक देना। बट बाद में मेरे को भी बॉल अच्छे से दिख रहा था, तो हम दोनों ने चालू किया कि जितना हो सकता है हर ओवर में लेते करके, और अच्छा चल रहा था वो। कैसा फील हो रहा है? पहली टीम आप बन गई है जो पहुंच गई है फाइनल्स के अंदर। क्राउड के बारे में आपके थॉट्स? क्राउड बहुत ही अच्छा है। और मैं कश्मीर में यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ खेलने के लिए, तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जो लोगों का प्यार है क्रिकेट के लिए, जो इतना उनका प्यार है, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। उसके अलावा मुझे बताइएगा, जो स्ट्रेटजी आपकी थी टीम यूनिट में, किस तरह आपने इनिंग्स को एंकर किया और उसके बाद 190 रन हमेशा सेफ स्कोर होता है सेमीफाइनल्स के अंदर। बट देन हमने देखा कि रन चेज में सुल्तान ने वापसी का कमबैक किया और एक समय लग रहा था कि शायद वो मुकाबला लेके जाएंगे, लेकिन 19वां ओवर मेरा ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक T20 एक ऐसा गेम है कि जहाँ पे कोई भी स्कोर इजी नहीं है, और जो उनका टीम था उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया था। बट कैसा था कि हमारे पास आई थिंक बॉलिंग वाइज बहुत एक्सपीरियंस ज़्यादा था। परवेज़ भाई थे, इकबाल था, और जो दो तीन बॉलिंग बीच में हुई थी, तो वो एक्सपीरियंस काउंट होता है कि ये गेम में आपका एक्सपीरियंस क्या है और उस टाइम पे आप क्या डालते हो, वही बहुत इंपॉर्टेंट। आप 190 करके भी कभी कभी हार सकते हो और 100 रन बना के भी जीत सकते हो, तो वो प्रेशर कौन सोकअप करता है वो इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। थैंक यू वेरी मच पी पराग फॉर टॉकिंग विद अस। पी पराग बात कर रहे थे हमारे साथ और अब बातचीत करना चाहेंगे एक और खिलाड़ी इकबाल अब्दुल्ला से बात करेंगे इस मैच के हवाले से। हालांकि इकबाल भाई वेलकम। हालांकि दिन आज अच्छा नहीं रहा, गेंद के साथ बड़े रन्स आप पे पड़े। क्या चल रहा था आपके माइंड में उस समय जब रन्स पड़ रहे थे? मे बी दे वर टेकिंग द गेम अवे फ्रॉम यू। नहीं, दिन अच्छा नहीं था ये नहीं कह सकते। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने मैच जीता, तो मैच जीता इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता है क्योंकि हम लोगों ने मैच जीता है। रही बात कुछ हिट्स लगे मुझे, बट ठीक है, ये लर्निंग है। हम चाहते हैं कि आप हर मैच में एक तरह से बॉल नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट प्लेयर मिलेंगे, सिचुएशन डिफरेंट मिलेगी, तो आपको बाउंस बैक करना आना चाहिए। क्या चल रहा था माइंड में जब दोनों बैटर्स काउंटर अटैक उन्होंने शुरू किया? बड़े शॉट्स खेले, मे बी इनका प्लान था कि हम जितना डीप खेलेंगे शायद रन चेज में आगे आ सकते हैं, रन चेज के आसपास पहुंच सकते हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये टीम मेरे लिए स्पेशली अननोन थी क्योंकि हम लोग इस साइड पे बहुत कम टूर्नामेंट खेलते हैं और बहुत मैचेस नहीं होते कि हमें उतना पता नहीं रहता कि कौन से प्लेयर क्या। बस जिस तरह से वो लोग बैटिंग कर रहे थे उस तरह से लग रहा था कि एक टाइम ऐसा लग रहा था कि चेज हो सकता है। जी जुबैर, आपसे कुछ पूछना चाहिए। Talking about your bowling, it was not a day for you, but definitely the way Bijbehara Sports Club played today, it was definitely a treat to watch. How do you assess this wicket and किस तरीके से आप आगे देखना चाहते हैं फाइनल्स में बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब को? नो डाउट, जिस तरह से वॉलंटियर्स और यहाँ के सेक्रेटरी और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि परवेज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है इन विकेटों पे, और जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अलीशान विकेट है, बहुत अच्छी विकेट है, एक प्रॉपर क्रिकेटिंग विकेट है जहाँ पे आपको बैटिंग भी एक आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास बॉलिंग में हुनर है तो आप बॉल भी डाल सकते हो। तो ओवरऑल बहुत अच्छा विकेट है और हमारी टीम फाइनल में पहुंची है बिजबेहारा प्रीमियर लीग के, और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हम शुरू के मैचेस जीतते हुए आए हैं, लीग गेम में एक गेम हारे थे, वो हमारे लिए अच्छा था कि हमें पता है कि सामने की टीम कमज़ोर नहीं है, तो हम ट्राई यही करेंगे कि बेटर से बेटर क्रिकेट खेलें। Iqbal bhai, Bijbehara Sports Club winning the toss first, important toss this was, and electing to bat, scored 190, which was somehow a chaseable total on this ground. But what was the plan in the dugout after the first innings? We will want to know about this thing. मुझे नहीं लगता कि इन विकेटों पे ज़्यादा टॉस मैटर करता है। अगर आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं या फिर अच्छी बॉलिंग आपके पास बॉलिंग यूनिट है, तो 190 दिखने में टोटल बहुत अच्छा है। बट अगर सामने की आप T20 के सारे गेम्स में देखें कि कोई प्लेयर
ऐसा 50-50 3-4 प्लेयर नहीं करते हैं, हमेशा वो टीम जीतती है 30-40 30-40, उनके 3-4 प्लेयर करते हैं तो 190 स्कोर पहुंचता है। मुझे लगता है जिस तरह से आज इन लोगों ये सामने की टीम चेस कर रही थी, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि विकेट बेटर हो गया फर्स्ट इनिंग से, बट तारीफ करनी होगी कि हमारे बॉलरों की जो लास्ट में ये टोटल को डिफेंड किया। One last question. See, Sultan Warriors Baramulla, we know, is a strong side. 190 they were chasing, and in the first 5 overs they batted so brilliantly, belted the bowlers. What do you think was the turning point of the match when you were bowling your team? What do you think? टर्निंग पॉइंट मैच का यही है कि लास्ट तक हम लोगों ने होप नहीं छोड़ी इस मैच में, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस आप देखोगे, आप मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी मैचेस का एक्सपीरियंस है, परवेज़ के पास है, और यहाँ के लोकल लड़के जो खेल रहे हैं उनके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है, और कोशिश यही रहेगी कि एज ए टीम खेले और जल्दी से जल्दी जेल हो ताकि हमारी टीम फाइनल में अच्छा करे। Thank you so much, Iqbal bhai. Congratulations to you. Thank you for giving us your valuable time. So this was all from Iqbal Abdullah. Thank you very much. We will be live with you in the post-match presentation. Thank you very much.